आपस में नंबर शेयर हो गए हों और ऑप्शनल वगैरह की बातें अगर हो गई हों तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास. हेलो एंड गुड इवनिंग and welcome to our class in the prelims revision program where we'll be continuing with economy. I hope you can see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we'll get started. Chat बहुत interesting होती है यार आप लोगों की. I always spend some time reading the chat before I start the class. I hope you can. चलो बढ़िया. All right. तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर कल थे, है ना. आई होप यू हैव बीन रिवाइजिंग वेल. सो आई जस्ट टर्न द चैट ऑफ एंड प्रखर वीकली टेस्ट तो होने चाहिए यार. वीकली टेस्ट यू शुड गेट. दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड. अगर नहीं मिल रहे तो आई जस्ट चेक. मैं आज बात कर लेता हूँ. आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. यू शुड ऑल गेट वीकली टेस्ट आल्सो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है. हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लोहड़ी. Also yesterday I forgot to wish, so happy Lohri and happy Makar Sankranti to all of you. We'll continue from where we had left off. So we'll continue from national income accounting. We had left at investment, तो वहीं से continue करेंगे, उसको खत्म करेंगे. Now, before I do that, I just want to talk to you about a couple of things. I don't know if I'm assuming that all of you already know, but still for those who don't, I am running this free guidance initiative for prelims 2025 called STEP. You can search for it on Telegram or on my YouTube and you'll find it. Basically कुछ नहीं है. हमारा जो PRP चल रहा है या जो भी हमारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं उन्हीं से अलाइंड प्लान है और वहां पर टारगेट ट्रैकिंग होती है डेली. सो डू पार्टिसिपेट एक्टिवली देयर. आई ऑल्सो पार्टिसिपेट. आई पुट अ वॉइस नोट डेली एंड आई ऑल्सो पुट माई ओन टारगेट ट्रैकिंग जर्नल देयर एवरी डे. उससे क्या होता है कि वी ऑल stay involved in the process. We see that others are working. Dekho, I assume that a lot of you might be sitting at home and preparing. And I also had this problem. When I was preparing in 21, 22, both my attempts, I was also preparing from home. I used to go to a library, but वहाँ पर भी ऐसे बहुत कोई serious जनता थी नहीं. And you face this problem that people are not serious and you feel alone, right? You feel as if you are working in a sort of, in a vacuum, so to speak, where there is not enough interaction with the outside world. आप ज़्यादा interaction भी नहीं कर सकते because we have very limited time. So for that reason, that group was started. In this STEP initiative, what we basically do is we post target tracking every day and I post voice notes every day. There are daily targets. अगर आप क्लास देख रहे हैं तो यही आपका टारगेट इसके हिसाब से अलाइंड होता है. जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका टारगेट सेल्फ स्टडी के हिसाब से अलाइंड होता है. सेम टॉपिक्स दैट वी स्टडी हियर. ये PYQ की जो PDF है ये मैं वहाँ पर भी अपलोड करता हूँ ताकि वहाँ पे लोग खुद से सॉल्व कर सकें. And I also have promised that in this STEP initiative, I will be covering all previous year questions. जितने भी previous year questions आए हैं, not जैसे हम यहाँ पर तो CDS, CAPF सब कुछ कर रहे हैं. I can't of course cover that whole gamut on YouTube. On YouTube, I will cover previous year questions of all subjects of prelims and all questions of prelims from 2013 to 2024. क्योंकि ये काम हमें करना जरूरी होता है. अब यहाँ पे इकोनॉमी में तो मैं आपको क्लास में करा देता हूँ, बट देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स आल्सो एंड देयर माइट बी पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस क्लास एंड रीडिंग बाय देमसेल्व्स. दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली हैव टू डू बट वी डोंट. तो ये काम मैं यूट्यूब पे करूंगा एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. तो इसकी फर्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा एंड आई बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी. अब आप बोलोगे कि सर व्हाई आर यू स्टार्टिंग विद पॉलिटी? बिकॉज वी आर डूइंग इकोनॉमी. पहले बात तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस तो हम यहाँ कर ही रहे हैं. दूसरा, आई विल स्टार्ट इन अ ऑर्डर. आई हैव टू फिनिश ऑल क्वेश्चंस. बेसिकली मैंने ये सोचा है कि जो हमारा प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है, that prelims revision program had started in January, first week of January, I think second week of January, 7th Jan या 8th Jan को I think हमारी first class थी and it is going to end on 20th April. So this is 15 weeks. अब इन 15 weeks में मैंने सोचा है कि हर week मैं 2 videos डालूंगा YouTube पे जिसमें PYQs cover होंगे. It will not be exactly 30 videos, थोड़ा ऊपर नीचे होगा. I have calculated किस वीडियो में कितने क्वेश्चंस होने हैं. सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 25 वीडियोस जिसमें ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब ये दीज आर 12 इयर्स. इन दीज 12 इयर्स देयर आर
1200 questions. Of course, all 1200 are not relevant for us because there would be some questions that are purely of current affairs of that year which are now no longer relevant. उन questions को हटा देंगे और कुछ questions will obviously be repeated. जो repeated questions होंगे उनको साथ में कर लेंगे. So I will be covering all of this on YouTube. तो ये सारे previous year questions मैं YouTube पे cover करने वाला हूँ and you can watch that from tomorrow. कल उसकी video YouTube पे upload हो जाएगी. I will record it tomorrow morning and it will get uploaded tomorrow. So do follow this initiative. I hope most of you are already there and do participate actively. मैं पहले खुद नहीं भरता था वो. I have made a target tracking journal. I used to ask people to fill it, but I don't fill it myself. I did not fill it myself earlier. Now I have started filling it myself also. I post my own target tracking also and it's genuinely helping. होता क्या है कि जैसे आप अपने डे के टारगेट्स लिखते हो, the moment you complete something, you go to that target tracking journal, you tick it. So you get that feeling of I have actually worked and that gives positive reinforcement. फिर और मन करता है काम करने का. So do participate actively here, right? And बिल्कुल हमारे जो हमारा schedule है उसी से aligned है. So should not be a problem whatsoever. Now let's start. Still have 4 minutes. So is this clear? Is this clear? चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो हम कल नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने जहां पे कल रुका था, दीज आर द नोट्स वी वर स्टडीइंग. कल वाले ही नोट्स हैं, सो नो फ्रेश नोट्स टुडे. कल वाले ही नोट्स हैं, इसमें पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग कवर्ड है. सो yesterday we studied till investment, I think. हाँ, यहाँ पर रुके थे हम कल, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं. we'll start with investment. So investment can be called as expenditure. Investment क्या होता है? It is money spent on capital. Capital क्या होता है? Tools and technologies. But what is the broader meaning of the word capital? The broader meaning of the word capital is anything that gives a future stream of benefits. So I can say that expenditure on goods that are not consumed today, not consumed immediately, but are used to create future benefits. Expenditure on capital is known as investment. ये तो बात हम पढ़ चुके हैं पहले से. When we were reading factors of production, हमने capital के types भी देखे थे. Please recall, जल्दी से अपने दिमाग में 5 types of capital याद कर लो. Social capital पे previous year question आ चुका है, वो भी याद कर लो क्या होता था. Trust and harmony in society. Now, for the purposes of national income accounting, what all do I include in investment? This is the question. Okay? National income accounting में मैं investment में क्या क्या include करता हूँ? So here, obviously there will be some purchase of capital goods by firms. Firms will purchase certain capital goods. Those capital goods are not goods that are going to be consumed today. They are obviously tools and technologies that will give a future stream of benefits. This expenditure of firms on capital goods is called gross fixed capital formation, GFCF. Gross fixed capital formation. This is fixed capital. What is fixed capital? What is working capital? We will see. हम देखेंगे fixed और working capital में फर्क. Till that time, till we see this, we will see this in capital markets in detail. But till then, just let's call this gross fixed capital formation. Gross fixed capital formation. Firms spend money on buying capital goods. Fixed और working capital पे UPSC में prelims में last year या last year question आया था. But we'll see that when we read capital markets. So एक तो ये component है investment का, gross fixed capital formation. अब यहाँ पर अगर gross लिखा है तो कुछ net भी होगा, वो भी calculate करते हैं. Now, investment in the economy also includes change in inventory. That is unsold goods. अब ये तो capital goods नहीं है. Unsold goods are not capital goods. They are actually final goods, final consumer goods. है ना? But पहले तो आप याद करो कि GDP में हम calculate क्या कर रहे हैं? Goods produced. So they are goods that are produced, but they have not been sold. They have not been sold today. आज ये goods sold नहीं हुए. याद करो when we read circular flow of income model, when households started saving, we were seeing that model in the initial stage when pens were being produced. When households started saving, some unsold goods were left with the firm.
those goods have been produced, those goods have already been produced, but they have not been sold, they are unsold. So some money has been spent on producing these goods, so money has been spent, and when they are sold in the future, they will give certain benefits, right? So they also fit into the definition. Expenditure on goods that are not consumed today but will give future stream of benefits. So unsold goods basically change in inventory of firms. Goods that are produced this year but not sold this year are also counted in investment for the purposes of GDP calculation. Lastly, even households will do certain investment. Households will also do certain investment, such as the purchase of real estate, purchase of houses. So even this is counted. Now you will say here that land is not counted because land is not produced, but houses are produced. So even household investment for the purpose of investment in the economy, if I'm counting GDP from the method of C plus I plus G plus X minus M, what we are trying to see is what is included in this I. In this I, obviously there is one component of firms buying fixed capital, so gross fixed capital formation. There is one component of change in inventory of firms, unsold goods, because these goods will give a future stream of benefits in the future, and residential investment, investment by households in things such as purchase of real estate, purchase of houses, etc. Now, we read there are two types of goods. We have read that there are two types of goods. हमने दो types के goods पढ़े. One is final good, one is intermediate good. In final goods, there are two types of goods. Goods that are had by consumers, these are known as consumer goods, and goods that are taken by firms, these are known as capital goods. How did we classify this for easier understanding? We said that intermediate goods are ingredients in production process. Capital goods क्या है? What are capital goods? Capital goods are assistants in production process. Now, what we have not accounted for, ultimately GDP calculation is an accounting exercise. One variable we have not accounted for when we count investment like this. When we count investment expenditure on these, we don't account for one variable. That variable is the normal wear and tear of these goods. The normal wear and tear. For example, if you look at the production process of Sarthi IS, Sarthi IS is producing educational services. In the production process of Sarthi IS, this board is helping. So this board is a capital good. Now this board has its normal wear and tear. It will not stay like this in perpetuity. पूरी जिंदगी तो ये बोर्ड ऐसा नहीं रहेगा, इस पे थोड़ा सा wear and tear होगा. Now we have to estimate the life of this good. कि आज ये बोर्ड खरीदा है तो ये कितने टाइम तक रहेगा. Let's say I estimate that the life of this good is 10 years. That is my estimation. कोई बोर्ड्स तो 5 साल में भी खराब हो जाएंगे, कोई बोर्ड्स 50 साल तक भी चल जाएंगे, but I estimate that on an average level the life of this good is 10 years. So from this basis I say that every year this capital good, this board faces a wear and tear of 10%. अब of course compounding होगी, simple ऐसा नहीं होगा कि 10% there will be compounding, but for the purposes of understanding हम मान लेते हैं 10% each साल. This is not how actual accounting is done, but just for the purposes of understanding. We assume that there will be some wear and tear. This good will have certain wear and tear. It has a certain life. I think it has a life of 10 years. There is a standard accounting process. उस standard accounting process में हमने माना कि digital boards की जो life है वो 10 year है. And wear and tear is 10% every year. Wear and tear is 10% every year. तो अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं, आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इन्वेस्टमेंट सारथी आईएस हैज डन दिस ईयर. इस साल सारथी आईएस ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग जीडीपी. इन जीडीपी आई हैव टू सी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय फर्म्स. I have to see this. This is part of investment. GDP is C plus I plus G plus X minus N.
In I there is a component of gross fixed capital formation. अब इस gross fixed capital formation में I have to subtract some value. तो देखते हैं सारथी आईएस ने इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट करी, उससे हमें आइडिया हो जाएगा. Let's say सारथी आईएस buys in 2024. सारथी आईएस purchased 2 digital boards. One digital board generally comes for let's say 3 lakh rupees. तो हमने कहा कि one digital board comes for 3 lakh rupees. So in this year, Saarthi IAS did an investment expenditure in terms of gross fixed capital formation of 6 lakhs. In 2025, Saarthi IAS purchases 3 new digital boards. So gross fixed capital expenditure or gross fixed capital formation in 2025 becomes 3 digital boards into 3 lakh, which is now 9 lakh. But I also have to subtract the value that these boards have lost now. They have lost certain value. They have lost certain value. ये अगर 1 साल पुराना बोर्ड है, इसकी 10% वैल्यू लॉस हो गई है. Now I have done this through an accounting exercise. मैंने ये accounting के थ्रू किया है, एक estimation के थ्रू किया है. That does not actually mean that this board will stop working in 10 years. But on an average, I have taken this as an accounting exercise. उस accounting exercise को लेके now whatever was purchased last year, जो last year purchase किया था, उसमें जो loss of value हुई है, वो minus करना चाहिए. So last year we purchased goods, let's say for 6 lakh rupees. There were 2 boards. They lose value at 10% every year. So I will from this 9 lakh subtract 60,000. And this will be my actual investment of this year. Previous good की जो wear and tear हुई, previous goods की जो wear and tear हुई, मैंने उसको हटा दिया और नए goods जो मैंने खरीदे उसको मैंने काउंट किया. So 9 lakh minus 60,000. So actual capital formation or fixed capital formation in this year is 9 lakh minus 60,000 equal to 8 lakh 40,000. Now this wear and tear, this allowance for wear and tear of a capital good is what I call, this is called by the term depreciation. So what I have to do is I have to say that gross investment minus depreciation is equal to net investment. What was gross investment of this year? 9 lakh rupees. What is depreciation of this year? 60,000 rupees equal to net investment. Actual investment done this year is 8 lakh 40,000. So this is the term depreciation. Although I'm sure आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ा अगर, so this is what it means. We have a certain allowance. We have a certain allowance for wear and tear, an annual allowance for wear and tear. Right? Now this is called depreciation. Depreciation is an accounting exercise. Depreciation is an accounting exercise. It does not mean that actually the goods have that value of time. That goods have life of 10 years. It does not actually mean that this board will only last for 10 years. It might last for 5 years. It might last for 15 years. We will still depreciate it as per its depreciation value, which is calculated by accountants. How depreciation value of various things is calculated, this we don't have to get into. We just need to know that this depreciation is there. So gross investment is the goods bought today. In this case, in Saarthi IAS case, we said 9 lakh is gross investment. Depreciation of previous goods is 60,000. So net investment will be gross investment minus depreciation. Okay, is this thing clear? Is this thing clear? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है भी नहीं. Even if we just remember this line, it will work. No, nothing much to remember here. All right. चलो अब yesterday we have seen something like gross value addition method, GVA method, gross value added method. This is what we were seeing, right? We will see GVA method. We will calculate value added at each stage, and that will lead to final goods and services की market value. हमें क्या calculate करना है? GDP, which is value of final goods and services produced in an economy in a given time period, usually a year.
उसके लिए हमने कल जीवीए मेथड देखा था, अब उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू दैट जीवीए मेथड. In that GVA method, we said that GDP is value of final goods and services produced. How do we calculate the value of a good? इसीलिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ताकि अब हम यहाँ पे डाउट ना आए. याद करो, how are we calculating value or revenue? Quantity of that good produced into price. जब हम ये ग्राफ बना रहे थे, so we calculated this area, quantity into price. We have done this calculation earlier. So value is quantity into price. Now what we are going to see is that in GDP calculation, which price should we choose? There are various options in choosing this price. Quantity तो obvious है, quantity तो जो इस साल produce हुआ है वही है. Price कौन सा choose करें? Which price should be the actual price that we choose here? In that there are various methods and various options. On those various options, there are different names that are assigned to GDP. Nominal GDP, real GDP, GDP at factor cost, GDP at market price, GDP at basic price. Now we will understand, it is all variation of this price. We will now understand how this price varies. Quantity तो है, हमें पता है, quantity हमें पता चल जाएगा कि इतना production हुआ है. Let's say economy has produced 100 pens this year. What price should I multiply this now to get the value of GDP? Because I have to get value, उसके लिए मुझे प्राइस चाहिए. तो अब इस प्राइस को कैसे देखते हैं? There are two options. One is price level based on variation in time. One is price level based on variation in time. This year's prices should I choose? Should I choose last year, some other year? This is one. One is different prices in the production process. Production process में भी बहुत prices आएंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे. So different prices in the production process and variation in time. These two things we have to incorporate. And then we have to see which price level we choose. तो पहले variation in time देखते हैं. Now, let's get back to our circular flow. We were in that economy, we were only producing pens. Let's say in the first year or in the year of 2024, this economy produces 10 pens. And the price of each pen is rupees 100. So what is the GDP of this economy? 1000 rupees. Now, in 2025, in the year 2025, this economy only produces pens. In the year 2025, this economy again produces 10 pens. But the price of pens has increased. There has been inflation in the price of pens. Now pens are selling at rupees 200. So I will say that now GDP is rupees 2000. Is this a fair comparison? This is not a fair comparison because actual output has not increased. Economy was producing 10 pens in 2024. Economy is still producing 10 pens in 2025. Actual output of the economy has not increased. Only price levels have changed. Right? Prices have increased, output has not increased. So this does not seem like a fair comparison. I cannot say, now looking at this, that this economy has doubled its GDP. If I say this economy has doubled its GDP, it will not be a right estimation because actual output is the same. Right now, I am seeing an inflated figure of GDP. मैं एक inflated GDP का figure देख रहा हूँ. Inflated figure of GDP, a figure of GDP that is very high, very inflated, not the actual GDP, right? But if I simply go in the name of GDP, जो name है, जो सामने definition लिखी है, if I simply go as per names, then this seems right. Market value, final goods and services produced by an economy in a year. So this sort of calculation, when we are calculating GDP like this, we are calculating GDP for the year 2025 by quantity produced in 2025 into price of 2025. As per name, this is correct. As per definition, this is correct. But actually, in real terms, it is not correct. So I call this GDP nominal. Nominal GDP as per name. As per definition, this is right. This is nominal GDP. But nominal GDP tends to give an inflated value. Now,
to do an actual comparison, to do a proper comparison, what should I say? I should say that in 2024 this economy produced 10 pens at rupees 100 price. If I have to take 2025's GDP, I should take this quantity of 10 pens. Quantity of 2025 is not a problem, but I should compare at the same price level. Price level increase should not be counted. Only production increase should be counted. So I will say, for example, that in this year, in 2025, I will multiply the quantity produced in 2025 by the price level of 2024. Now I will say this quantity into price, 10 into 100. Now it is 1000. If I am doing this comparison, the conclusion that I derive is this economy has not increased its output at all. That this economy's GDP is the same. The output of this economy has not increased. Now this seems like a fair comparison. अब ये fair comparison है. पहले भी 10 पेन, अभी भी 10 पेन. Actually, the output of this economy has not increased. So this seems like a very fair comparison. This seems like a fairly fair comparison. So now this is a real comparison. This is a real comparison. So this value, if I calculate GDP like this, I say GDP of 2025 is quantity produced in 2025 multiplied by price of last year, 2024. Which year this is, we will see, but we take some price of previous year. When we take some price of previous year, this is a fair comparison. This is a real comparison known as real GDP. Real GDP. So nominal GDP and real GDP, right? There is some inflated value present in nominal GDP because it is representing only the increase in price. जो inflation हुई है इस value में, inflation of balloon सोचो अभी. Don't think inflation in economic terms. Think inflation in balloon terms. This is an inflated value. This is an inflated value simply because price levels had increased. Quantity production is the same. This is now a fair comparison. So this I will call real GDP. But as per name, this is correct. The white one is correct as per the name. So I will call this nominal GDP. Now look at this. GDP of year 2024. Quantity of 2024 into price of 2024. Price of that same year is known as current market price. The market that exists in that year. The market price that exists in the current year. So I will call this nominal GDP, correct as per name, where I count the current market price. 2024 की GDP calculate कर रहा हूं. I am calculating GDP of 2024 with price of 2024. GDP of 2024, price of 2024, correct as per name, calculated as current market price. If I calculate GDP of 2024 as output of 2024, quantity produced in 2024 into price of 2023, quantity of 2024 into price of 2023, I am calculating last year market price. So I have kept the market prices constant. I have kept the prices constant and then I am comparing. This I call real GDP or GDP at constant market prices. I will keep the prices constant. I just want to see how much there has been an increase in production. Now, usually I don't have to compare every year's GDP. पहले बताओ ये समझ आया नहीं? Is this concept clear? Current market price, constant market price, nominal GDP, real GDP and an inflated value. ये समझ आया या नहीं? पहले ये बताओ. ओके ठीक है, गुड. अब ऐसा तो होगा नहीं that I only have to compare 2023 and 24. अब यहां पर मैंने प्राइस ऑफ 2023 ले लिया, तो 2023 और 2024 को कंपेयर करना आसान है. अब नाउ इट्स इजी टू कंपेयर 2023 एंड 24. बट ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे सिर्फ एक साल से कंपेयर करना है. आई हैव टू कंपेयर, लेट्स से आई वांट टू कंपेयर जीडीपी ऑफ 2024 टू जीडीपी ऑफ 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. ऐसे तो फिर
बहुत सालों तक मुझे कंपैरिजन करना है. आई वांट टू सी जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, वेयर इज आवर आउटपुट गोइंग. सो आई कांट जस्ट फिक्स ओनली फॉर लास्ट ईयर, राइट. सिर्फ मैं लास्ट ईयर का फिक्स करूंगा तो एक ही साल से कंपेयर कर पाऊंगा. इन दिस केस इफ आई फॉलो दिस, I will only be able to compare GDP of 2024 and GDP of 2023. But if I want to compare over the years, I need to have 1 year as a base year. 1 year as a base year. Okay, this is the base year. From this base, we will keep calculating. We will fix the prices at this base, and then I will keep calculating. Let's say I fix the prices in 2016. I fix the prices in 2016. If I fix the prices in 2016, then 2017 I will calculate based on 2016 price. 2018 also I will calculate based on 2016 price. 2019 also I will calculate based on 2016 price. And even further, I will keep comparing by calculating at 2016 price. Now these are comparable. अब ये comparable हैं. 2020 भी same 2016 price पे, 2021 भी, 22 ऐसे मैं अब compare कर सकता हूं because I fixed it at a relatively stable year, and now throughout I can keep comparing. Now the question is, which year should I select as base year? मैं किस ईयर को सिलेक्ट करूं? अभी मैंने एग्जांपल दिया है 2016. 2016 इज नॉट इंडियाज बेस ईयर, यहां से कंफ्यूज मत होना. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. विच ईयर शुड आई सिलेक्ट एज बेस ईयर? हाउ शुड आई सिलेक्ट द बेस ईयर? ये आपको सोचना है. मैं आपको 1 मिनट देता हूं. थिंक फॉर 1 मिनट. हाउ शुड आई सिलेक्ट द बेस ईयर? मैं बेस ईयर कैसे सिलेक्ट करूं? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए बेस ईयर में? ये सोच के बताना जरा. Normal year, stable year, there should be no supply shock. Good. अरे सेंसस का क्या लेने देना है इससे यार? सेंसस का कोई लेना देना नहीं है इससे. We might have selected the census year, but it was not because census was held that year. That is not the reason. चलो देखते हैं. देखो, whichever base year I select, मैंने जो भी year as base year select कर लिया, whichever base year I select, my entire comparison now has to be on this base year. मैं हर साल की GDP, at least for 10-20 years it is possible कि मैं इसी base year से compare करता रहूंगा. If I will keep comparing to this base year should be a stable normal year. What is the meaning of stable normal year? आऊंगा इस पे. पहले हम base year की बात करते हैं. How to select base year? It should be a stable year. In that year, prices should not have been too high. Prices should not have been too low. अगर बहुत low prices काउंट कर लूंगा तो GDP वैल्यू ढंग से बढ़ेगी नहीं. अगर बहुत high prices काउंट कर लूंगा तो GDP वैल्यू बहुत inflated दिखेगी. So it should be a stable year, average year. Problem is that there is in any country, there is no year that is a normal year. ऐसा कौन सा year है जिसमें कुछ भी नहीं होता, सब कुछ normal रहता है? So we have to take a stable year in terms of prices. Something might be happening that year. Something might be happening that year. But in terms of prices, broadly that year should be a stable year. For example, let's say that now war is going on in the world between Russia and Ukraine since more than 3 years. There have been more than 1000 days of, abhi recently 1000 days of this war were completed. 3 साल से war चल रहा है. Now if I want to take 2024 as base year, if I want to take 2024 as base year, should I consider this fact? Of course I will consider it. मैं consider तो करूंगा ही कि यहाँ war चल रहा था. But I will say that now this war is not impacting the prices that much. This war I think started in 2022 or 21. I think 22 it started. So if this war started in 2022, right? In 2022 the impact of this war on prices was huge. But now it is still going on. But now its impact, the world has normalized it. Time has passed, people have normalized. Still it has some impact, but not that huge of an impact. So these things I will have to consider. So I should not consider those years
where war, famine, supply shocks, drought, floods that are impacting price levels. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ईयर ऐसा मिल जाए जिसमें ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो. I hope we get an year like this in our lives. But if you see, every year, if you look at the case of India, every year either some war is happening in our neighborhood, some coup happens, कहीं पे unfortunately कोई drought हो जाती है, कोई flood आ जाता है, कोई छोटा मोटा earthquake आ जाता है. This keeps on happening every year. Cyclones will come every year, for example. But things that do not impact the price level, that we see. हम consider क्या करेंगे? These things might happen, but they should not have an impact, huge impact on the price level. Then prices of that year should not be volatile. Not volatile means should not be too high, too low. They should be stable prices. Then this is also an important consideration that आप लोगों ने name नहीं किया. Production basket must nearly be same. Let's say I select 1900 as base year. I select 1900 as base year. अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? There are so many things that are produced today that were not produced in 1900. मैंने इतनी सारी चीजें हैं. For example, this board. Now I have to calculate the price of, if 1900 is my base year, I have to calculate the price of this board as per price levels of 1900. In 1900, nobody knew what this board will cost because this technology did not exist. So it becomes very, very difficult now for me to estimate. So the production basket meaning things that are produced in that year should be fairly similar to the things that are produced this year. Only then we can estimate the price. If I say price of this board, you have to now check at price levels of 2017. It's not a big deal. This board, you can say that yes, in 2017 itna price raha hoga. But from 1900 it will be very difficult because tab ye produce hi nahi hota tha. So production basket must be nearly the same. Therefore, the recent the year, the better it is. Jitna pass ka year hoga, utna better hoga. Right? Of course, this condition has to be agreed with all the other conditions together. सिर्फ इस condition को आप अकेले नहीं देख सकते. सारी conditions हैं, but this is also a condition. Lastly, another important condition, there should be no structural change in the economy in that year. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हम random या नया structural change किया है हमने for our growth. For example, we cannot select 2016 as our base year. Why? Because demonetization happened. There was a structural change in the economy. We cannot select 2017 because GST was introduced. I mean, this is one reason for not selecting 2017. If you want, you can. But this was one reason that a new structural change in the economy happened. The economy's structure completely changed with the introduction of GST. We'll see how when we read taxation. But these years should also be excluded. So for selection of base year, these are the criteria. Right? ये criteria हमें होने चाहिए कि stable year हो, war, famine, supply shocks, drought, flood, etc. other things that impact the price levels should not be there. Prices should not be volatile in the year. Production basket must nearly be same, so as recent as possible, and no major structural change in the economy. This is how I select a base year. Now, let's compare nominal and real GDP. Nominal and real GDP. Let's compare this. Let's say 2024 is my base year. अभी के लिए मान लो 2024 is my base year. If I calculate 2025 GDP at current market prices, it will be quantity of 2025 into price of 2025. If I calculate at constant market prices, it will be quantity of 2025 into price of 2024. This value, which is nominal level, which is at current market prices, is an inflated value. I want to see kitna inflated hai. How inflated is this value? For this, I introduce a concept to deflate the GDP to normal price called GDP deflator. What is GDP deflator? I want to deflate it back to normal price. So what I'll do is, I will see what is nominal GDP, which is GDP at this year's price level, and I will say real GDP at last year price level. Real GDP at last year price level and nominal GDP at this year's price level. That is the inflation. अब ये last year can be base year also. Concept समझना है, right? Last year can be base year also. So I can say real GDP at base year
and nominal GDP at this year, this is the level of inflation. This is how the prices have been higher. So in this case, what I will do is I will divide the nominal GDP by the real GDP. What I will do here is I will say that GDP deflator is equal to nominal GDP of 2025 divided by real GDP of 2025. इतना ही इन्फ्लेशन है, इतना ही ये ज्यादा है. If I divide this now, I will get quantity into 2025 into price of 2025 divided by quantity of 2025 into price of 2024. This gets cancelled. So it becomes price of 2025 divided by price of 2024. अगर मैं बेस ईयर से कंपेयर करूं, अगर मेरा बेस ईयर 2016 है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. If my base year is 2016, I can write like this also. I can calculate last year's also, I can calculate base year also, right? The concept of GDP deflator is telling what? How much is nominal GDP? How much is nominal GDP inflated over real GDP? How much is nominal GDP inflated over real GDP is giving the value of price of this year divided by, let's say, price of last year or price of base year. Now, is this not also an indicator of how much price levels have increased? Prices of pens this last year were 100 rupees. Prices of pen this year are 200 rupees. So I can say that there has been 100% inflation in this economy by calculating GDP deflator. And that is true. In this economy, there was actually 100% inflation. Only price levels had increased. GDP had not increased. So GDP deflator becomes an indicator of inflation also. दोबारा देखते हैं, what is GDP deflator? Nominal GDP is at this year's current market price. Real GDP is at last year constant price. I divide nominal by real. So I get price level of this year divided by price level of last year. So this shows a change in the price levels. So it is an indicator of inflation and it deflates the GDP to last year's price level. I'm checking how much is the GDP inflated. So it is called GDP deflator and it is a measurement of inflation. Now this is a very different measurement of inflation as compared to CPI, WPI. CPI और WPI और इसमें बहुत major difference है, but we'll understand this difference when we read CPI and WPI. Right? Broadly अगर मैं आपको बताऊं, एक लाइन में बता रहा हूं, अगर ये लाइन समझ नहीं भी आती तो भी ठीक है. In CPI and WPI we select a basket of goods. And then we measure inflation. Here we are simply dividing the entire GDP. What am I doing here? GDP of this year, which is nominal, by GDP of real. So GDP deflator से जो inflation calculate होती है, that is for all the goods and services in the economy. यहाँ पर we select a certain basket of goods and calculate their inflation. That is the difference. But even if you don't understand, when we read CPI, WPI, this will get clear to you. Other than this point, is this idea clear of GDP deflator? Question आ चुका है prelims में GDP deflator पे. Other than this point, is it clear? चलो, thank you. कोई गोट कह रहा है मुझे? नहीं यार. There is only one goat. Chat में I am not the goat. There is only one goat and his name is Lionel Messi. और जो इससे offend होना हो जाना. ठीक है? Anyway, just kidding. Now, अभी मैंने क्या देखा है? अभी I have compared price levels based on various years. Price level of various year, price level of base year, price level of this year, price level of last year, है ना? Now I will calculate. इससे मेरे को क्या मिला? Current prices और constant prices. Current और constant. Current of this year, constant fixed to a base. Now I will calculate GDP on the basis of price level based on various prices in the production process.
जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अब उस बेसिस पे मैं जीडीपी कैलकुलेट करता हूं। अगेन व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब अभी तो मैंने फिक्स कर लिया कि लेट्स से दीज आर प्राइसेस ऑफ 2016, मान लो अभी के लिए दीज आर प्राइसेस ऑफ 2016, बट 2016 के बाद प्राइसेस लाने के बाद भी आई विल हैव टू कैलकुलेट at which stage in the production process. ठीक है? There are three options. One option is prices that consumers are paying, prices that you and me are paying. Second option is prices that producers are receiving. Third option is price at factory gate. तीनों हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है? बस ध्यान से सुनना. You might get a bit confused here, इसलिए ध्यान से सुनना. बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं. Let's take the example of McDonald's. McDonald's. This is the firm of McDonald's, or restaurant of McDonald's. You take McDonald's sells you a burger. लंच नहीं किया तो भूख लग रही है, तो एग्जाम्पल सारे इस टाइप के निकलेंगे आज. McDonald's sells you a burger. For this burger you pay rupees 118. On your bill it is written burger rupees 100, GST rupees 18. Total bill is 118. This is written on your bill. Now in this case, the price that you have paid is market price in the market. Now McDonald's will receive 118 rupees. You will give to McDonald's. Now what will McDonald's do with this 118 rupees? With this 118 rupees that McDonald's has received, McDonald's will first deposit 18 rupees to the government. This is indirect taxation of GDP, of GST. Now एक दो चीजें बता रहा हूं टैक्सेशन के बारे में. This will get repeated in taxation lecture, but just for now, just for logic, responsibility of, ध्यान से सुनना, नहीं भी समझ आया तो वैसे रिपीट होगा, बट लिसन केयरफुली, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी. Responsibility of depositing tax to government. Responsibility of depositing tax to government is always of that person on whom tax is levied. जिस पे टैक्स लेवी किया जाता है उसकी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है टू डिपॉजिट दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट. समटाइम्स वी आर लीगली अलाउड टू शिफ्ट द बर्डन टू समवन एल्स. वी कैन शिफ्ट द बर्डन टू समवन एल्स. वी कैन आस्क समबडी एल्स टू पे लीगली. ये अलाउड है लीगली कभी कभी. इफ इट इज अलाउड टू शिफ्ट द बर्डन, मैकडॉनल्ड्स पे जीएसटी लगा है 18%, आप पे जीएसटी नहीं लगा है, मैकडॉनल्ड्स पे जीएसटी लगा है 18%. McDonald's is legally allowed to shift this burden onto you. You are paying. GST लगा किस पे था? To McDonald's. Deposit कौन करेगा? जिस पे लगा है. Responsibility of depositing is always of the entity which is taxed. ये हम देखेंगे. This is 18 rupees to government, right? This is indirect taxation. यहां पर मैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स की बात नहीं कर रहा. इनकम टैक्स कैसे लगेगा या कॉर्पोरेट टैक्स कैसे लगेगा मैकडॉनल्ड्स पे? McDonald's will have certain income which is profit. On that profit they will pay corporate tax. Tax levied on McDonald's. Who will pay that tax? Who will deposit to government? McDonald's. Can McDonald's shift corporate tax onto you? No. Therefore corporate tax is direct tax. GST was put on McDonald's. Tax laga किस पे? On McDonald's. Whose responsibility is it to deposit this? McDonald's. Can McDonald's shift this burden onto you? Yes. Therefore, it is indirect tax. This is how you classify direct and indirect tax. Although we will see this later. ठीक है, NADT में पढ़ाते हैं पहले दिन. So we will see this later. Now, McDonald's receives 118 rupees from you. McDonald's receives 118 rupees. 18 rupees it has the responsibility of giving to government. McDonald's now has 100 rupees left. This 100 rupees McDonald's will spend where? अब इस 100 rupees का McDonald's क्या करेगा?
McDonald's will distribute this to factors of production, which will be either in the form of wages, interest, profit, or rent. McDonald's will distribute this to factors of production. McDonald's will distribute this to factors of production. This is cost of factors of production, or 100 rupees here is what I will call factor cost. GDP at factor cost. अब समझ आया ये वर्ड फैक्टर कहां से आ रहा है यहां पे? द वर्ड फैक्टर कॉस्ट, राइट? एक और एग्जांपल देख लेते हैं. You buy burger from McDonald's. Government says to McDonald's that for every burger you produce, we will give you a subsidy. Government says for every burger you produce, we will give you a subsidy. That is, for every burger you produce, we will give you rupees 10. We will give you rupees 10. So and assume right now in this example, assume that there is no taxation. For every burger you produce, we will give you a subsidy of rupees 10. McDonald's then sells the burger for you to rupees 90. McDonald's sells the burger to you for rupees 90. You pay rupees 90. आपने कितना पे किया? Rupees 90. This is the market price. The price that you pay in the market, the price that consumers pay. This is consumer's price. Now, how much money did McDonald's receive in this case? 10 rupees from government, 90 rupees from you. McDonald's gets 100 rupees. On this 100 rupees, then McDonald's will distribute into various factors of production as wages, interest, profit, and rent. So now this is factor cost. This is factor cost and this is market price. In this example, what relation can I write? I can write that factor cost plus subsidy is equal to market price. Oh, sorry. Factor cost here is rupees 100. Factor cost minus subsidy is equal to market price. This I can write. Factor cost minus subsidy is equal to market price. 100 minus 10 is equal to 90. In this example, I can write factor cost plus tax is equal to factor cost plus tax is equal to market price. 100 plus 18 is equal to 118. You were paying 118 here. Bringing these two identities together, I can say factor cost plus tax minus subsidy is equal to market price. अब इस रिलेशनशिप में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस साइन में. हमेशा की प्रॉब्लम है कि प्लस आएगा टैक्स पे या माइनस आएगा टैक्स पे सब्सिडी पे. तो सीधी सी बात है, आप ये मैकडॉनल्ड्स वाला एग्जांपल याद रखो. फैक्टर कॉस्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स इज रुपीज 100. फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है, आई विल हैव टू ऐड द टैक्स. मैकडॉनल्ड्स विल शिफ्ट इट्स टैक्स बर्डन ऑन टू यू. इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है ये. दिस इज यहां पे जो भी टैक्स लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मींस लीगली अलाउड टू शिफ्ट द बर्डन टू समवन एल्स. McDonald's is legally allowed to shift the burden to you. So factor cost plus tax. And अगर टैक्स पे प्लस है तो सब्सिडी पे तो माइनस है. दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो. नहीं तो आई थिंक दिस एग्जांपल शुड शूट यू वेल. वो फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है. फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इज मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इज मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट 100 minus subsidy is market price. You are paying 90 rupees. Is this clear? ये समझ आ गया? ठीक है, चलो
नाउ हमने क्या माना इस एग्जांपल में? इन दिस एग्जांपल वी अज्यूम दैट 100 rupees was factor cost. You paid 118 rupees. 18 rupees went to government, that was tax. 100 rupees was factor cost that McDonald's received. But this is also not true factor cost. ये भी true factor cost नहीं है. कैसे नहीं है मैं बताता हूं. ये भी true factor cost नहीं है. This was just to make you understand. This is not true factor cost. अब देखते हैं. यहां तक हमने देख लिया. Factor cost plus tax minus subsidy is market price. So I can write GDP at market price. GDP at market price is equal to GDP at factor cost. GDP at factor cost plus taxes minus subsidies. GDP factor cost plus taxes minus subsidies is equal to GDP at market price. This I can write. Now यही हमने एग्जांपल देखा. यहीं पे दोबारा रिवाइज करोगे तो सेम एग्जांपल दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो. 118 for a burger which is market price. McDonald's get rupees 100 which is factor cost. Government gets rupees 18 which is tax. सेम. सब्सिडी का भी एग्जांपल दे दिया. बट दिस इज नॉट ट्रू फैक्टर कॉस्ट. ये ट्रू फैक्टर कॉस्ट नहीं है. देखते हैं क्यों नहीं है ये ट्रू फैक्टर कॉस्ट. ड्यूरिंग प्रोडक्शन जब मैकडॉनल्ड्स ये बर्गर बना रहा था, मैकडॉनल्ड्स ने वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट दिया है. मतलब मैकडॉनल्ड्स के पास कुछ लैंड था. मैकडॉनल्ड्स कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट दे रहा होगा, राइट? मैकडॉनल्ड्स मस्ट बी गिविंग सम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सम कॉस्ट ऑन रेंट, राइट? लेट्स से दैट इन दिस प्रेमाइसेस ऑफ मैकडॉनल्ड्स व्हाट वाज हैपनिंग. ये मैकडॉनल्ड्स की फर्म है, मैकडॉनल्ड्स का प्रेमाइसेस है. Let's try and understand what is happening in this premises of McDonald's. यहां क्या हो रहा है? During this production, when they were producing this burger, they have taken certain land, they are paying some electricity rate, etc. Let's say government had given them land on a subsidized rate. गवर्नमेंट ने इनको बोला था दैट आप जो रेंट देते हो, आप कुछ रेंट देते हो, वी विल गिव यू सर्टन सब्सिडी ऑन रेंट. यू गिव रेंट ऑफ 20 rupees, योर रेंट इज 20 rupees, बट वी विल गिव यू सर्टन सब्सिडी. वी विल गिव यू 2 rupees. हम आपको 2 rupees दे देंगे. तो आपको जो रेंट पे करना है, आपको रेंट सिर्फ 18 rupees पे करना है. 2 rupees विल बी पेड बाय गवर्नमेंट एज सब्सिडी. रेंट जो आप देते हो, आपका रेंट 20 rupees है, बट आउट ऑफ दैट 20 rupees, 2 rupees we as government will pay. 2 rupees, you only pay rupees 18. Second, McDonald's also pays here some, let's say, electricity charge. कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पे करता है मैकडॉनल्ड्स. लेट्स से दे पे 5 rupees. They consume electricity of 5 rupees. Government says you consume electricity of 5 rupees. On every 5 rupees consumption of electricity, you pay us 1 rupee tax. तो आप 5 मत करो, आप एक्चुअली 6 rupees पे करो. तो अब हमें क्या लग रहा है कि मैकडॉनल्ड्स का रेंट है 20 rupees, बट एक्चुअल रेंट क्या है? 18 rupees. 2 rupees तो गवर्नमेंट दे रही है, राइट? आई होप यू आर फॉलोइंग दिस ड्रिफ्ट. I am assuming that rent of McDonald's is 20 rupees in this example, but 2 rupees is being paid by government. So actual rent is only 18 rupees. I am assuming that electricity cost of McDonald's is 5 rupees. But what is McDonald's actually paying? 5 plus tax. So factor cost में एक element rent है. मैंने अज्यूम क्या किया है दैट मैकडॉनल्ड्स रेंट इज 20 rupees, बट इट इज एक्चुअली
18 rupees plus 2 rupees paid as subsidy. 2 रुपये इसमें सब्सिडी है, राइट? तो सब्सिडीज एंड टैक्सेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, राइट? McDonald's during production of this burger gets subsidized land, gets commercial rate electricity tax. Electricity is taxed at a high rate and land is given subsidized. अगर McDonald's को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, if McDonald's did not get any subsidy, तो McDonald's को अपना रेट बढ़ाना पड़ता. अभी उन्हें रेंट कम देना है क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिली हुई है. Right now McDonald's has to give less rent so it can keep the prices low. It has to pay less rent because it has a subsidy. If there was no subsidy, अगर McDonald's को कोई सब्सिडी नहीं मिलती, if there was no subsidy on land, burger cost would have increased. McDonald's को अपना कॉस्ट बढ़ाना पड़ता जो वो आपसे लेते. If there was no tax on electricity, अभी McDonald's को इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलती है because of tax. If there was no tax, burger cost would have gone down. So there are production subsidies and production taxes also. Taxes and subsidies that are during the process of production. Taxes and subsidies that are during the process of production. Here, during the process of production, during this process of production, there are certain taxes and subsidies. There are certain taxes and subsidies during the process of production. During the process of production. इसके बाद ये ब्लू में मार्क्ड है. During the process of production, there are some taxes and subsidies. They will also impact the true factor cost. They will also impact the true factor cost. और उसके बाद there are product. Once the product is made, burger बन गया. Burger के ऊपर भी taxes and subsidies हैं. Right now, I have only removed the impact of product taxes and subsidies. In this example so far, if I am counting 100 as factor cost, I have only removed the example of product taxes and subsidies. जो यहां पर टैक्स सब्सिडी लग रही थी वो मैंने काउंट करी है. जो रेंट पे टैक्स सब्सिडी लग रही थी, the production taxes and subsidies, that I have not removed. Right? So ये true factor cost नहीं है. True factor cost will be something else. इतना समझ आया? Now, अब लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्राइस. अभी तक हमने बेसिक प्राइस वर्ड यूज नहीं किया. वी हैव नॉट यूज्ड द वर्ड बेसिक प्राइस. बेसिक प्राइस मैं आपको अब एग्जैक्टली देखते हैं. दिस इज द प्रेमाइसेस ऑफ मैकडॉनल्ड्स. दिस इज यू. McDonald's produces the burger here at gate of McDonald's. अभी गेट पे है, जस्ट प्रोड्यूस हुआ नहीं है. At this point, just at production, अभी इस पे टैक्स नहीं लगा. Just the product has been made. The moment it is given to you, there will be product taxes and subsidies, product tax and product subsidies. Right? What you are paying is market price. You are paying market price. Just at the gate, जिस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज लगते हैं, here the moment it was produced, आपको जैसे ही दिया, the event was sale. On that sale, product tax and product subsidies were imposed. At this price, just at the completion of production, this is called basic price. Basic price. So 100 rupees here was actually our basic price, जो हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज का इफेक्ट हटा के. After removing the effect of product taxes and product subsidies, what we calculate is basic price. Now, during the process of production also there are certain production taxes
and certain production subsidies. When I will remove the effect of even these production taxes and subsidies, I will get here, this money will be distributed to factors of production. This is the money that gets distributed to factors of production. So this is factor cost. This is actual factor cost, cost of factors of production. This is basic price. So now, whatever there are factors of production, जो factors of production की cost है, factors of production, same logic. जैसे वहां पर tax subsidy का impact था, tax we had added, subsidies we had subtracted, same logic. Factor cost plus production tax minus production subsidies. Factor cost plus production tax minus production subsidies comes to basic prices. Basic prices plus product tax minus product subsidy comes to market prices. Right? Now, is this logic clear? ये please ना, I'm giving you 1 minute. Please write this down. Please इसको लिख लो. Even though I know it is written here, still अपने हाथ से एक बार इसको अपनी notebook में लिख लो. Exactly what is written on the board, please write it. Please write it. Please write this exact thing. I will clear the board so that it's easier to write. Please write this thing in your notebook. This exact logic, please write. Now, these signs of plus and minus, are dependent on the arrow. अभी ये arrow ऐसा है, तो ये signs valid हैं. अगर ये arrow मैं ऐसा कर दूंगा, तो I will have to change the signs. ये बात आपको clear हो रही है ना? क्योंकि ये equal to का equation है. अगर मैं arrow का direction change कर दूंगा, signs change हो जाएंगे. चलो, ग्रेट, लिख लिया होगा आई एम अज्यूमिंग अब तक, नहीं तो वैसे नोट्स में लिखा हुआ है. प्लीज इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है बाद में, वी टेंड टू फॉरगेट, सो प्लीज रिवाइज दिस पार्ट एट लीस्ट रिवाइज प्रॉपर्ली, ऑल्दो वी हैव अंडरस्टूड इन अ लॉट ऑफ डिटेल, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो अब इसी लॉजिक से ये आपने अपने सामने लिखा हुआ है, यू हैव रिटन दिस इन फ्रंट ऑफ यू, जहां भी लिखा हुआ है उसको खोल के रखो. Now you see this. GDP at basic prices plus product tax minus product subsidies is equal to GDP at market prices. GDP at factor cost plus production taxes minus production subsidies is equal to GDP at basic prices. So from these two equations, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ही बस मैंने जीडीपी लिख दिया है. I have just written GDP in the above equation. So GDP at market prices is equal to GDP at factor cost. GDP at market prices is equal to GDP at factor cost. GDP at factor cost plus tax. Which type of tax? Product tax and production tax. Product tax and production tax, and subsidy minus subsidy. With subsidies, production subsidies and product subsidies. ठीक है, ये भी लिख लो. Please write these three equations also. I know they are the same, but I don't want you to get confused. 1 मिनट की बात है, इसको भी लिख लो एक बार. Actually, we can take a small break also.
We can take a small break. We'll just take a break of 3 minutes. And you can write this. आप इसको प्लीज लिख लो. चलो, let's continue. Let's continue. Now, if there is a standard notation, अगर कोई standard कहीं पे कुछ भी ना लिखा हो, let's say सिर्फ लिखा हो GDP, या तो लिखा हो नीचे फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइसेस या मार्केट प्राइसेस, या तो ऐसे लिखा हो. But if this is not written, only word GDP is written. Only word GDP is written somewhere. It means GDP at market price. If word GDP is written somewhere, it means GDP at market price. Now, similarly, if word GVA is written somewhere, GVA, या तो लिखा हो at basic price, factor cost, at market price, या तो ये लिखा हो. अगर ये ना लिखा हो, if this is not written, GVA, if it is just GVA written, it means GVA at basic price. ठीक है? Now, from this logic, I can say that GDP, this means GDP at market price is equal to GVA at basic price plus tax minus product subsidies. Plus tax minus plus product tax minus product subsidies. ठीक है? सेम लॉजिक है ऊपर का ही, बस ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. अगर ऐसे लिखा हो कहीं, you don't get confused. If just GDP is written, it means GDP at market price. If just GVA is written, it means GVA at basic price. Now we are going to study how actually GDP is estimated in India. How actually GDP is estimated in India. Actual process क्या है of the government. Now,
सबसे पहले यहां वर्ड लिखा है एस्टिमेशन. We are merely estimating India's GDP. We cannot possibly measure India's GDP. हम मेजर नहीं कर सकते इंडिया की जीडीपी. मेजर करने के लिए तो हमें हर फर्म पे जाना पड़ेगा. Even if I am following, let's say, value addition method, I will have to calculate for every single firm. Then I need data of every single firm. Imagine in India there are approximately 10 crore firms. So for 10 crore firms, I need the data. So we don't actually measure, we estimate. We estimate. उसमें there is a process called sampling. Now, sampling का best example है जो मैं करता हूं chat के साथ. What do I do in the chat? I ask you, have you understood this? There, let's say there are 100 people in this class. Only 10 write in the chat that yes, we have understood. Rest 90 don't write. वो कुछ भी नहीं लिखते. From this 10, I actually extrapolate कि अगर इन लोगों को समझ आ गया है, अगर majority लोग यहाँ पर yes लिख रहे हैं, तो सबको ही समझ आ गया होगा, even if you don't write yourself. Otherwise, I will have to ask every single one of you individually. But I take these 10 people who write here as a sample. That if these 10 people are writing yes, that means it is clear. That means it must be clear to everyone else also. This is the idea of sampling. आप जिस भी ऑप्शनल में पढ़ोगे, if you read in, let's say, anthropology, psychology, in all of these options where there is field research involved, sampling is a major topic that we have to study, right? Sampling. अब सैम्पलिंग देखने से पहले, हाउ डिड वी डू सैम्पलिंग, देन वी विल सी हाउ वी डिड सैम्पलिंग. ये देखने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हिच मिनिस्ट्री कैलकुलेट्स जीडीपी. द मिनिस्ट्री दैट कैलकुलेट्स जीडीपी इन इंडिया इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. This Ministry of Statistics and Program Implementation, this has various wings. One wing is NSO, National Statistics Office. Under NSO there are two bodies. Now they have been merged into one, but there were earlier two bodies. पहले अलग अलग थी, now इनको merge कर दिया. One was National Sample Survey Organization. What was the job of National Sample Survey Organization? First, to construct a sample. एक sample construct करो. From that sample, collect data. Construct a sample and connect data. How do we construct a sample? We'll see. First, construct a sample and collect data. So, Sample Survey Organization. Now, this is merely collection of data. ये तो सिर्फ collection of data है. Data in itself is not presentable. Presentable नहीं है. It is data, it is not information. To transform this data into information in a useful form, to present this data in a useful form, we had something called CSO, Central Statistics Office. So NSSO would construct the sample, then do a survey to collect the data, National Sample Survey Organization. Then they would present this data in a useful form. Presenting this data in a useful form is presenting data as information in a useful form as info. This job was of Central Statistics Office. Now they have been merged into National Statistics Office. Okay? This ministry also has something called National Statistics Commission. National Statistics Commission is like the brain of this ministry. NSO is like the hands of this ministry. National Statistics Commission is an advisory body. It will advise NSO on how or what norms are to be followed. How should you construct the sample? What questions should you ask during data collection? How should you present the information? They will be giving advice to NSO. The third wing of Ministry of Statistics, this is Statistics, National Statistics Office, National Statistics Commission. There is a third wing called Program Implementation Wing. Program Implementation Wing runs the scheme called MPLADS, Member of Parliament Local Area Development Scheme, MPLADS. They were the ones who were responsible for running MPLADS. Now, let's see how we were doing
this process, how we were doing this process of GDP estimation in India before 2015. Now, इससे पहले मैं आपको बताता हूं meaning of the word sampling. To create a sample, let's say this is the total set of people in India. This is the total set of people in India. I want to create a sample. Whatever data I get from that sample, I will only talk to these many. I will only talk to these many. From these, I will do a survey and collect data. मैं इतना सही survey करके data collect करूंगा. From whatever data I collect, I will extrapolate. I will then extrapolate to the entire population. I will collect from these many and I will extrapolate to the entire population. Now, it now is very important कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं. How do I construct this sample? Ideally, this sample should be a representative sample. It should represent the entire population of India properly. How will it be representative? It must be representative by age, by gender, by caste, by region, by language. So if let's say in India, let's say just broad estimation that 20% people are less than 15 years of age and 30% people are more than 65 years of age, then if that is true for the entire population, then I should do this for this sample also. Gender wise also I should have a representative sample, region wise also, language wise also. In every particular aspect in which I want to actually get data, I should have a representative sample. Now, I will ask a question, you will just reply with yes or no. Is census a sample survey? Is census of India a sample survey? Is census of India sample survey? Yes or no? Good. Sample survey nahi hai census. Census is not a sample survey. In census, it is actually, we talk to everyone. In census, we talk to everyone. We don't construct a sample. In census, we look at this big circle. We talk to everyone in census. Census is not a sample survey. Sample surveys are like this. National Family Health Survey. We take a representative sample and then from that sample, हम एक ऐसा sample बनाते हैं जो पूरे इंडिया को represent करे. From that sample, then we extrapolate data. National Family Health Survey conducted by NSSO. Therefore, census, which is not a sample survey, census is not a sample survey. Therefore, census is not done by NSSO. इनका काम sample collect करके survey लेना है. इनका काम simple data collection का नहीं है. Census कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो this is your homework. Who does census? You will find out. I will not tell you. NSSO does not do census because census is not a sample survey, right? Now, before 2015, what did we do? NSSO used to carry out something called an annual survey of industries. NSSO still carries out ASI. आज भी ASI होता है, उसका पर्पस अलग है. Before 2015, we were using annual survey of industries to calculate GDP. NSSO used to carry out annual survey of industries. The sample size was 20,000 firms. 20,000 firms का data लेते थे. This was the sample. From these firms, we used to get data of production. We did not follow the gross value addition method. Value addition method में हम क्या करते थे? Value of output minus value of input. This is not the method we were following. We were following proper production method. We used to go and ask them, tell me the value of final goods produced by you. Of course, this is not a good method. अच्छा method तो नहीं है, but this is what we were doing before 2015. So we were not following this value addition method. We were following production method. Production method was used, and on this sample, on this annual survey of industries, from these 20,000 firms, from these 20,000 companies, we would ask, what is your production of final goods?
फ्रॉम दिस वी वुड देन एक्सट्रैपोलेट टू एक्चुअल जीडीपी कि 20,000 फर्म्स का इतना फाइनल गुड प्रोडक्शन है, तो एक्चुअल फर्म्स का कितना होगा. Now these 20,000 firms were in various sectors of the economy. If I know, let's say that here there are, let's say 2,000 agricultural firms, 7,000 services firms. Let's say I have some data like this of this sample, and now to extrapolate to entire GDP, इस sample से मुझे पूरे पे जाना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किस सेक्टर की कितनी फर्म्स बड़े सैंपल में है, मतलब बड़े फिगर में है. I know that in this figure, here there are, in my sample there are 2,000 firms of agriculture. I also need to know that in the entire economy of India, how many firms are there of agriculture. तभी तो मैं extrapolate कर पाऊंगा, right? Only then I will be able to extrapolate. So who gave this data कि कितनी firms actually हैं economy में? Each ministry used to give. So various ministries would give information about actual number of firms. So Ministry of Health would give how many hospitals are there. In my sample there are 100 hospitals. Ministry of Health is saying India has, let's say, 10 lakh hospitals. From now I will extrapolate from this on various grounds and then calculate GDP using production method. The base year at that time was 2004-2005. Now there are various problems in this calculation. There were various problems. सबसे बड़ी तो obvious problem हमें दिख ही रही है, production method. We are following production method, ये तो एक problem है. What is the other problem? This sample was not a representative sample. इंडिया में actual firms broadly इंडिया में actual firms हैं 10 करोड़. 10 करोड़ firms का data आप निकाल रहे हो from 20,000 firms. So this was not a representative sample, and this sample was actually biased towards manufacturing sector. It had more firms of manufacturing sector, but India's GDP is coming maximum from services sector. That was also a problem. Then this was simply survey. You were going and asking them what is their production, right? You did not have actual data. So there were a lot of problems in this method. So in 2015 we changed our method of GDP calculation. Now current method is this method. Let's see now how we estimate GDP. सबसे पहले we changed our sample. हमने अपना sample change किया. Our sample was annual survey of industries. From annual survey of industries we changed to Ministry of Corporate Affairs 21 database. What is MCA 21 database? MCA 21 database is run by Ministry of Corporate Affairs. In this database, all firms in the country, all firms that are registered, basically all formal firms, formal, informal, organized, unorganized, we will see when we read unemployment. All formal firms register here. For example, Sarthi IS is a formal firm. Sarthi IS is also registered at the MCA 21 database. Every firm that you see, every formal firm is registered here. Every year these firms have to give certain data here. कुछ data यहाँ पर इन firms को देना होता है. What data is it? बहुत सारे compliances होते हैं, आपकी board meeting में क्या हुआ वगैरह वगैरह. The data that is actually given includes the data of revenue of this firm and expenditure of this firm. How much did this firm earn and how much did this firm spend? If I know that what is your earning, this is your value of output. I know what is your spending, this is your value of input. So from this now I will calculate gross value addition method. Value addition of all firms through MCA 21 database. Now careful, this is not a survey. ये सर्वे नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है, बिकॉज सब अपनी बैलेंस शीट सबमिट करते हैं. सारी ये जो फर्म्स हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं, दे सबमिट देयर बैलेंस शीट. सबकी बैलेंस शीट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग. देन वैल्यू एडिशन कैन बी कैलकुलेटेड. हाउ मेनी फर्म्स आर रजिस्टर्ड हियर? 15 लाख फर्म्स आर रजिस्टर्ड. अब जैसे आप सोचोगे कि मैं कह रहा था देयर आर 10 लाख फर्म्स इन द कंट्री, only 15 lakh are 10 crore firms, only 15 lakh are registered. Example देखो, old Rajendra Nagar में there is a shop called Popular Juice, right? या आपके घर के पास कोई ऐसी small juice की shop है, that is in the informal sector.
that will not be registered here. That will not be registered here, right? But still all formal firms will be registered. So 15 lakh firms are registered, and no offense to Popular Juice, हो सकता है वो registered हो, and I'm just estimating. 15 lakh firms are registered here, right? Now there is no bias towards the industrial sector which was there in ASI. So first change that we did was from Annual Survey of Industries, we went to MCA 21 database. All formal firms were registered. We got actual data of balance sheets. Using this actual data, we calculated value addition method. 15 lakh firms are registered and no bias towards the industrial sector is there. So MCA 21 was a more diverse and representative sample. One more thing that happened here, one more thing that happened in MCA 21 database, it accounted for non-manufacturing activity of manufacturing firms. Let's see what this is. Let's say there is a steel manufacturing firm. There is a steel manufacturing firm. This firm is also doing certain non-manufacturing activities, like it might be doing certain customer support for its clients. It is giving service of customer support. Earlier in Annual Survey of Industries, only its main process, which was steel manufacturing, was captured. Annual Survey of Industries में सिर्फ steel manufacturing capture होती थी. अब even these non-manufacturing activities like customer support, other non-manufacturing activities that is done by manufacturing firms, even that is captured, because now we have total revenue and total expenditure. Total revenue है हमारे पास, total expenditure है, so we can calculate. Now, we wanted a more recent base year. ये तो है ही, the recent the base year, the better it is. So we shifted the base year from 2004-05 to 2011-12. We said that whenever we say India's headline growth, जब भी हम इंडिया का headline growth बोलेंगे, headline growth meaning the growth figures that appear in the newspapers, GDP growth rate at 5%, GDP growth rate at 3%, GDP growth rate at 8%, the one we see in the newspapers, in the headlines, that will be GDP at market price, which is constant. So GDP at constant market price. Market price समझ आया? Market price, prices that we pay. Constant. GDP at constant market price will be our indicator of headline growth. Second, we also have to give sector-wise estimates. Agriculture sector का क्या हुआ? Services sector का क्या हुआ? Manufacturing sector का क्या हुआ? Agriculture में food processing sector का क्या हुआ? इस टाइप का भी हमें करना है. This is sector-wise estimates. This will be done at GVA at basic price. So these are the changes we have made. ये changes, अब now we measure according to this. So we now say that whenever we write headline growth, we will write GDP at constant market prices. Whenever we write sector-wise estimates, we will write GVA at basic prices. For any sector, we will have GVA at basic price. We accounted for non-manufacturing activities of manufacturing firms. Right? Now, we also did something more. We also started collecting data from SEBI, PFRDA. SEBI is Securities and Exchange Board of India. We'll see this when we read capital markets. PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, Insurance Regulatory Development Authority. We also started collecting data from these firms, from these AIFIs or these regulators. We collected data from them also for getting data of financial sector. What is financial sector and what is real sector, we will see. इस पे भी क्वेश्चन आया है प्रिंस में. So we collected data from these in financial sector. Then local bodies and autonomous institutions, they are also doing certain work. They are also doing administrative services. So these were also covered. Now, why did we make this change? One reason for making this change is very obvious, that now our data collection is much more accurate. Our GDP figures are much more accurate. But the IMF and the UN, IMF and UN have together come up with something called System of National Accounts. System of National Accounts. This is a system for national income accounting. System for national income accounting. This is done. This was made so that international comparison
and credibility can be done. हर जगह this is now a worldwide system. Every country has to be compliant with SNA standards. Only then investors across the world will know what your GDP growth is, and they will know that your numbers are actually accurate. So we had to comply with the system of national accounts, which is made by IMF and UN. The system of national accounts, the first set of accounting measures came in 1998. The most recent one came in 2008, and next update is due in 2025. इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको ये. Next update of SNA is due in 2020. It has not come yet. I don't know when it will come, but it is due in 2025. So this becomes very relevant for prelims 2025. How did we change our data collection? So the next one is due in 2025. Now there will be some new changes. Then we will again have to change our GDP calculation methodology. Now, is this clear? ये जो मैंने यहां पर चेंजेस बताए आपको, ऑफ कोर्स याद नहीं हुए होंगे अभी, बट क्लियर हो गए? आर दे क्लियर? आर दे क्लियर कि क्या क्या चेंजेस किए हमने और क्यों क्यों किए? चलो थोड़ा सा और क्लियर कर लो. अरे आंसर मत देखना यार. दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन एक्चुअली आई कैन जस्ट शो यू इन अ डिफरेंट वे. ऐसे दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा. यू विल सी द आंसर्स. सो let me show you something. This is GS3 mains paper of 2021, and read this question. 2021 में they have asked. यार क्या मिलता है तुम्हें चैट स्पैम करके? Can you see this question? अब ये क्वेश्चन ये मेंस मैंने दिया है और मुझे जो आपको मैंने बताया है उसका 10% भी नहीं आता था. ठीक है, क्योंकि मैं भी रट के गया था कि बस मुझे बस ये पता था कि बेस ईयर चेंज हुआ है. दैट्स ऑल आई न्यू. आई डिड नॉट नो दिस होल राम कथा. बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज कम इन द मेंस एंड नेक्स्ट ईयर एसएनए अपडेट इज 2025. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. नाउ आंसर्स लिख रहे हो यार चैट में, मतलब हद ही हो गई. I mean, I get it. It's ठीक है, Gen Z. I'll just peg it to that. But why? It's not necessary to do these things. यार कौन से यहाँ पे तुम्हें marks मिल रहे हैं? This is just for your learning only. Just for your learning only. Anyway. So these are the changes that have happened. These are the changes that have happened in our method of GDP calculation. Now I am going to ask you a question and I'm going to give you 4 minutes. I'm going to ask you a question. I'm going to give you 4 minutes. In these 4 minutes, you have to think of the answer. And obviously, एक तो yes or no component है इस question का.
You also have to think of if no then why, if yes then why. ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूं. आपके पास 4 मिनट्स है. हाँ जी, क्या आंसर निकला? What is your answer? Just tell me yes or no. Yes, no.
चलो, यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी कि सब गलत जवाब दोगे। अब मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं जिसका आपने आंसर दिया है। अरे चैट ऑफ नहीं हुई क्या? नाउ आई राइट द क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग लिख रहे हो। आई राइट द क्वेश्चन जिसका एक्चुअल आंसर यू गाइज आर राइटिंग। You are writing answer to the question, is GDP a measure of economic welfare? क्या GDP is a measure of economic welfare? Does GDP measure economic welfare? Answer is no. But is it an indicator? Yes, it is an indicator. Indicator तो है, it is not the only indicator. It is not the only indicator, but it is definitely an indicator. एक indicator तो है. Therefore, answer to this question is yes. And why may you would write. Of course, ऐसा means में question नहीं आएगा. This they will not do in the means. I'm just telling you, you should always read what is written carefully. GDP is an indicator, but it's not the only indicator. Is GDP a measure of economic welfare? No, it's not. GDP does not measure economic welfare. No. So GDP is an indicator. Right? Why is it a good? Why is it? What are the good things about GDP? There are well-established standards of measurement. हमें पता है exactly measure कैसे होता है. प्रोडक्शन, जीडीपी हम क्या काउंट कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी. इट इज द सेम एज द कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी. इट इज यूटिलिटी. तो इकोनॉमिक वेलफेयर और वेलबींग ऑफ अ कंट्री, उसमें ये यूटिलिटी तो काउंट होनी चाहिए. वट एवर इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज द सेम थिंग वी आर कंज्यूमिंग. Whatever we are consuming for utility. So it does talk about at some level utility that the country is deriving. So it can be an economic indicator of well-being, but it's not the only one. Now, what are the issues of GDP? One, we don't count the black economy. जो economy formal नहीं है, जो black economy है, जो transactions record नहीं होती, that are not counted. GDP is deriving from the circular flow of income model. If GDP is deriving from circular flow of income model, the same problem of donut economics, embedded economy, care economy not being there, वो problems यहाँ भी हैं. Things that cannot be valued. GDP is value of final goods and services. Things that cannot be valued. Life expectancy, schooling, this is not included. Externalities are not accounted for. Externalities are not accounted for. If we produce cigarettes or we produce books, cigarette worth rupees 100, book worth rupees 100. In both cases, GDP will only be rupees 100. So externalities are not accounted for. It is not a measure of inequality. Does not measure inequality at all. Rich keeps getting richer, poor keeps getting poorer, even then GDP will rise. And it does not डायरेक्टली एस्टिमेट द इनफॉर्मल सेक्टर प्रॉपर्ली. ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर हम एस्टिमेट नहीं करते. हमारे पास वहां 15 लाख फर्म्स का डेटा है ऑफ फॉर्मल सेक्टर. फ्रॉम दैट डेटा वी एक्सट्रापोलेट इनफॉर्मल सेक्टर. We make an estimation, but it's an estimate, so obviously there will be certain problems. Now, if I now talk about GDP as a measure of welfare, if I now have to make GDP the measure of welfare, इंडिकेटर तो वो ठीक है, बट उस इंडिकेटर में कुछ इश्यूज हैं. If I have to make GDP measure of welfare, I need to change something in GDP. What do I need to change? That we'll see now. There is a concept of national economic welfare. Economics optional का concept है, but क्यों पढ़ा रहा हूं that will become evident to you. Concept of national economic welfare. National economic welfare tries to make GDP a measure of welfare. इसके लिए क्या करता है? इसके लिए सबसे पहले कहता है that there are various things that need to be added or subtracted from GDP. सबसे पहले leisure needs to be added. For example, अगर इंडिया में जो वर्क आवर्स हैं, आजकल बहुत डिबेट चल रही है इस पे, 90 आवर्स 70 आवर्स, वाइफ को देख के क्या करोगे वगैरह वगैरह.
if you reduce the number of working hours in India, right? If you reduce the number of working hours in India, people's leisure will increase. They will spend more time with their families. The national welfare will increase. National welfare will increase if working hours are reduced. At least थोड़े टाइम तक तो होगा ही, जीरो नहीं करना है, बट अगर आप लोगों को थोड़ा लेजर टाइम ज्यादा दे दो कि वो अपने घर पे रहें, फैमिली से बात करें, खुश रहें, तो नेशनल वेलफेयर इंक्रीज करेगा, बट जीडीपी विल नॉट इंक्रीज. सो वी हैव टू अकाउंट फॉर लेजर. Secondly, we have to account for non-marketed personal services. Non-marketed personal services like I get a lot of pleasure from painting. I don't. Let's say I get a lot of pleasure from playing chess, or I get a lot of pleasure from helping my mom cook. I help my mom in the kitchen and I get a lot of pleasure out of it. Usse a service is performed. I am helping my mom, but no income is exchanged. Since there is no valuation of the service, it will not be counted in GDP. But non-marketed personal services, right? They should also be counted in welfare. Welfare में जरूर count होनी चाहिए. Then environmental pollution, the externality that we are having towards the environment, that should be counted. Care economy should be counted. And there is also a concept of regrettable necessities. Regrettable necessities का क्या मतलब? Government spends 10 crores this year, let's say, on law and order, on stopping crime. Now, this expenditure is counted in GDP क्योंकि सर्विस दी जा रही है, policing service is being given, policing service is being produced, expenditure GDP में count होगा. But is this expenditure actually denoting welfare? No, it's not. Why? Because अगर actual India में welfare होता, we would not even need a police. Nobody would do crime. So this is a necessity because of the regrettable human condition that crimes happen. It is a necessity to spend on law and order, but it is regrettable. It's not a part of welfare. GDP का अगर मैं कहूं कि GDP में जो भी वैल्यू है वो यूटिलिटी डोनेट करती है, ये वैल्यू यूटिलिटी डिनोट नहीं करती. क्यों नहीं करती? Because if there was actual welfare, then this expenditure would not have been done. This is just an economic model. इसको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है. क्यों समझा रहा हूं मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, या I'll just tell you after this only. Concept of national economic welfare is real GDP plus minus depreciation plus leisure time plus non-marketed services. Add the value of leisure, add the value of non-marketed services, reduce environmental costs, reduce regrettable costs. Then GDP would be a better indicator or a measure of national economic welfare. Now, some economists argue that even this is not perfect because we also must look at things like composition of output. आपने कहा GDP is output. कैसी output है? If a country has too many luxury goods, if one country has too many luxury goods, it is producing for the rich people. So, composition of output. Is it that necessary goods are more, luxury goods are less, so there is proper production? सबके लिए production हो रही है या कुछ ही लोगों के लिए production हो रही है? If there are too many luxury goods and very few necessary goods, that means it is being produced for the very rich. Then, distribution of output. How is this output distributed? Does everyone get an equal share? So, equality. Then, if there is an increase in GDP, if India's GDP is growing, how is that national income increasing? कैसे increase हो रही है? अगर ये increase ऐसा हो रहा है जिससे workers की health खराब हो रही है, if this increase is like this, where worker health is being compromised, where their family time is being compromised, if this increase is due to working hours, if this increase is due to working conditions, then, or bad working conditions and high working hours, then it is not a measure of welfare. We also need to check whether this national income is increasing in the form of labor intensive or capital intensive. ये हमें समझ आएगा अभी. When we read employment, we will understand both these terms. Broadly, this means, is growth in labor deriving growth in GDP, or is GDP growth driven from growth in capital? Technology driven growth है या human driven growth है? Right? These things are there. Now, why did, एक और चीज पढ़ लेते हैं फिर आगे जाएंगे. There is also a concept of green GDP.
green GDP. Green GDP says from the GDP you subtract the environmental cost of national product. जो GDP is your national product, from this subtract the environmental cost, subtract the cost of pollution, subtract the cost of depletion of natural resources, only then you come to green GDP. यहीं से linked एक concept है ecosystem services का. There are 4 types of ecosystem services, not going into detail, जब environment पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, but just know this that there are 4 types. हम environment में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ecosystem services. Then there are also certain other issues in green GDP calculation, that this calculation is subjective, vague, and this is actually an agenda. ये भी मैं आपको environment में पढ़ाऊंगा. These sort of things are an agenda that is pushed by the developed world on the developing world. क्योंकि पहले हमने पोल्यूट कर दिया और हम डेवलप हो गए, हमारा HDI स्कोर हाई हो गया, अब हम डेवलपिंग वर्ल्ड को कहते हैं ग्रीन जीडीपी बताओ, राइट? बट we'll discuss this entire gamut of international climate change negotiations when we read environment में ये सब देखेंगे. This is green GDP. There are certain alternatives to GDP. Certain alternatives to GDP are Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development Index, Green GDP तो हमने देख ही लिया, and Gross National Happiness. Right? HDI we will see when we read poverty. Gross national happiness is not that important. I mean it's a very very vague calculation, so it's not important. इससे ज्यादा better है अगर आप इससे national economic welfare वाला concept पढ़ लो. अब gross national happiness is basically like it is broadly like an idea that has been proposed which is purely subjective. But ठीक है, if you want to read, mains में there has been a question on it, so you can read about it. Now, why did I teach you national economic welfare? It's not never going to be asked in prelims. Prelims का topic ही नहीं है. मैंने आपसे ये क्यों पूछा? I'll just show you. In the essay paper of 2013 there was a question क्या था? Question was exactly, I'll just read out the question was GDP along with GDH, gross domestic happiness, GDP along with gross domestic happiness would be right index for judging well-being of a country. Now if you know national economic welfare, आप उसको अगर essay में लिखना हो तो that is a very wonderful thing to write if written in a paragraph form. Understood? तो इसलिए आपको बताया क्योंकि it's possible some essay like this comes or something like this comes in ethics paper. तो वहां पर ये national economic welfare is not my estimation. It is an actual economic concept. There is, चलो economics का नाम छोड़ो. This is an actual economic concept. So when you write answers like this, it becomes better. Is it clear? समझ आया? Is this clear? चलो आगे चलते हैं. Let's continue. Now, there are some other indicators also. अभी तक हमने क्या indicators देखे हैं? अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है? We have studied GDP. We have studied GNP. हमने GDP और GNP पढ़ा था. इनमें रिलेशन क्या था? Net factor income from abroad. Then we have studied this. How do we price GDP?
what are the price levels we use? So we can use constant prices or current prices. From constant and current, we have understood the logic of nominal GDP and real GDP. Constant prices and current prices, we have understood the logic of nominal GDP and real GDP. From this, we have also understood the logic of GDP deflator. एक रिवीजन करा रहा हूं आपकी क्विक, जो जो इस टॉपिक में हमने पढ़ा है. Then we also have studied price over time. Oh, sorry, this is price over time. Then we have studied price over various production stages. Price over various production stages. Here we studied three things. We studied something called factor cost, basic price and market price. ये हमने पढ़ लिया. Then we have studied GDP as an indicator of welfare, and we have also read something to the tune of GDP. How is it actually estimated? In this actual estimation, we have read some changes that were made in 2015, and here we have read that we are now compliant with system of national accounts. Now, ये थोड़ा अच्छे से बना नहीं because this is a board, but अगर आप अपने नोट्स बनाते हो, या तो देखो आप इन हैंड रिटन नोट्स को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो. आपको शायद पहली 2-3 क्लास में लगा हो कि बहुत बड़े नोट्स हैं. आई टोल्ड यू दैट, वो स्लाइड से ट्रांसफर किया था. इस संडे बैठ के मैं उनको भी शॉर्टन कर दूंगा. बट अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, दे शुड लुक लाइक दिस. अगर आपको समझ आ गया, एंड आई एम अज्यूमिंग अगेन from my flawed exercise of sampling, that's the only way I can understand. From sampling, it is like most people have understood. So you should make notes like this. अब जब आपके ऐसे नोट्स हैं, अब इससे होती है एक्टिव रिकॉल. आपने लिखा जीडीपी जीएनपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फर्क है, राइट? व्हाट वाज द एक्चुअल कैलकुलेशन? वाज जीडीपी पार्ट ऑफ वेलफेयर? कांस्टेंट करंट प्राइसेस में क्या फर्क है? नॉमिनल रियल जीडीपी में क्या फर्क है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेटर ऑफ? प्रोडक्शन स्टेजेस में फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस था. इनमें रिलेशनशिप क्या है? हम कैसे प्रेजेंट करते हैं अपनी जीडीपी? एक्चुअल एस्टिमेशन में क्या क्या चेंजेस किए इन 2015? अब 2015 में क्या चेंजेस? इंडिया का बेस ईयर क्या है? इंडिया में कौन सा सैंपल यूज करता है? डेटा बेस कौन सा है? विच मिनिस्ट्री कैलकुलेट्स इट? उस मिनिस्ट्री का और क्या काम है? उसमें एएसआई कौन कराता है? उस मिनिस्ट्री में जो वेरियस डिविजन हैं उनका क्या काम है? And what is system of national accounts? आप ऐसे करोगे तो you will be able to revise in this entire lecture in about 5 minutes. This is what I want you to do before you sleep. अगर आप मेरे साथ 4:30, आप most likely I think all of my classes will be at 4:30, barring अगर 1-2 दिन कभी कुछ इधर उधर हो गया, but otherwise I will be taking almost all the classes for this prelims at 4:30. Before you sleep, I want you to do this exercise. Do this exercise and remember from it, only then sleep. आप भूलोगे नहीं. एंड राइट दिस इन अ फॉर्मल वे. ये नहीं कि किसी भी नोटबुक में लिख दिया. सेकंड टाइम व्हेन यू रिवाइज, अगेन रिवाइज फ्रॉम दिस चार्ट. एंड जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, मेक दिस चार्ट विदाउट ओपनिंग द नोट्स. मेक दिस चार्ट विदाउट ओपनिंग द नोट्स कि आज मैंने ये पढ़ा. देन रिवाइज फ्रॉम दिस चार्ट. देन इट विल बी एन ईजी वे टू रिमेंबर what you actually what you remember you will recall. What you have not remembered, आपको याद तो आ जाएगा कि यार मुझे ना यहाँ पे याद नहीं आ रहा कि एक्चुअल एस्टिमेशन में बेस ईयर चेंज करने के अलावा और कौन कौन से चेंजेस थे. सेबी का क्या रोल था? दिस आई डोंट रिमेंबर कि सेबी का क्या डेटा यूज किया था. एमसीए 21 डेटाबेस क्या होता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा. देन ओपन द नोट्स एंड सी इट. So this is what I want you to do before you sleep. Now, there are few other indicators that we have to read. ये तो हमने पढ़ लिया. इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. One is net domestic product. Now these things, यहां पर अब मैं जो भी लिखूंगा, प्लीज कीप राइटिंग विद मी. ऑल्दो यहां सब लिखा हुआ है, यहां पर नीचे एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. और क्वेश्चन भी आया हुआ है इस चीज पे बहुत बार. ठीक है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बट स्टिल कीप राइटिंग विद मी. व्हाट विल बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सिंपली जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन. ग्रॉस से नेट पे जाना है तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. आई विल माइनस depreciation from GDP, I will get to net domestic product. Now, net national product.
नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आई विल कैलकुलेट फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, gross national product is GDP plus net factor income from abroad minus depreciation. तो I now know GDP, GNP, NDP, NNP, ये चार हमने कैलकुलेट करे. नाउ अभी तक हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग. देयर आर वेरियस मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बट व्हाट इज नेशनल इनकम? एक्चुअली व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट. अब क्यों है ये नेशनल इनकम? विल नॉट गो इनटू दैट, राइट, बिकॉज इसका एक्चुअली देयर इज नो लॉजिक हियर, देयर इज नो लॉजिक हियर. दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. जैसे जीडीपी की डेफिनेशन वैसी क्यों है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. सिमिलरली नेशनल इनकम ये क्यों है, इसके पीछे देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ लॉजिक. तो नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, net national product at factor cost. If you still want to know the logic, I can tell you in very small, in a one small explanation, but prove करने नहीं जाऊंगा मैं. Gross national product was what all nationals were producing, और gross national product को मैं क्या लिख रहा था? I was writing as gross national income. Gross national income को अगर मैं अब लिखूं, I can write as net national income. तो मैं इसमें से मैंने net national income लिखा, तो मैंने depreciation हटा दिया. नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम को अब मुझे किस पे कैलकुलेट करना है? ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुआ है, मैं इसको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करूंगा. तो नेट नेशनल इनकम इज व्हाट ऑल नेशनल्स आर गेटिंग, व्हाट ऑल नेशनल्स ऑफ द कंट्री आर गेटिंग. क्योंकि जीएनपी वाज नेशनल्स, डजंट मैटर वेदर इंडियंस आर स्टेइंग इन यूएसए और स्टेइंग इन इंडिया, जीएनपी वाज फॉर इंडियंस और जीएनआई वाज फॉर इंडियंस. जीएनआई से मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडियंस मिल गई. अब नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडियंस को मैं फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करूंगा, तो क्या आएगा? व्हाट एक्चुअली गोज टू इंडियंस एज फैक्टर इनकम, व्हाट एक्चुअली गोज टू इंडियंस, एक्चुअल नेट है ये, व्हाट एक्चुअली गोज टू नेशनल्स एज फैक्टर इनकम. सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. what goes to Indian nationals as income. Income is given for exchange of factors of production. So NNP at factor cost will be NNP at market price minus tax plus subsidy. अब माइनस टैक्स सब्सिडी क्यों है? बिकॉज सिंपली द साइंस आर चेंज्ड. ये मत भूलना, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एड टैक्स सब्ट्रैक्ट सब्सिडी. अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? In this calculation, I am doing market price to factor cost. So I will subtract tax and add subsidy. Subtract tax, add subsidies. Now, there is one more measure called personal income. Personal income. Now, be careful. Personal income की definition बहुत ध्यान से पढ़ना. Personal income की definition बहुत ध्यान से पढ़ना. Personal income is sum of all money received by households. Sum of all money received by households, not sum of all money earned by households. This definition does not say the word earned, not earned. Personal income is sum of all money received by households. Received, जो households receive करते हैं. Now, there is a firm called McDonald's. There is a firm called McDonald's. Or let's look at an Indian firm. Let's say there is a firm called Reliance. Reliance receives certain money. Reliance receives certain money. अभी टैक्स सब्सिडी को भूल के, just understand this. Forget the impact of tax subsidy. Reliance receives certain money. This comes into Reliance bank account. Reliance bank account. From this, Reliance gives certain wages. Reliance gives interest back to banks or wherever they have borrowed money from. They give certain rent. Whatever profits
whatever profits Reliance retains, whatever profits Reliance makes, on these profits, there is a corporate tax. This tax goes to government. Let's say Reliance made profit of 1000 crores this year. This is the profit that Reliance made. On this, Reliance will pay corporate tax of 25%, which is 250 crores. They are now left with 750 crores in bank account of Reliance. 750 crores are now there in bank account of Reliance Industries. Reliance Industries का बैंक अकाउंट है. एक बात बताता हूं, कभी भी अगर फर्म्स के बारे में सोचना हो, जैसे लेट्स से यू वांट टू थिंक ऑफ रिलायंस. रिलायंस इज अ सेपरेट लीगल पर्सन. फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, दिस पर्सन इज सेपरेट एंड मुकेश अंबानी इज सेपरेट. ऑल्दो हम पढ़ेंगे जब हम कंपनीज देखेंगे, कैपिटल मार्केट्स देखेंगे. This person is separate. Reliance is a separate legal person. Sarthi IS is a separate legal person. Varun Jain sir is a separate legal person. Right? He might be owner. He might be the owner, but he is not the same entity. This 750 crores of profit is in Reliance bank account. From Reliance bank account, they might choose, Reliance might choose whether they want to give this money as profit, whether they want to distribute this profit in its shareholders or not. They might choose that we are only giving Ambani ji 300 crore rupees this year. अंबानी जी को सिर्फ मात्र स्मॉल अमाउंट ऑफ 300 crore rupees दिए जाएंगे. 450 crore rupees will be retained for future. 450 crore rupees retained for future. Reliance can choose to do this. Reliance can choose to do this. अगर टाइम बचा तो I'll tell you how a company actually works. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, फाउंडर क्या होते हैं वगैरह मैं आपको आज ही बता दूंगा. ठीक है, बट Reliance might choose to do this. That Reliance says that we will retain 450 crores of profit. अभी हम सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे शेयर होल्डर्स में. We will retain 450 crores of profit and give 300 crores to Ambani ji. Ambani ji is a person, he is part of a household. So in this case, what is the money received by households? Money received by households. यहां wages गई हैं. Wages, let's say I am working in Reliance. This also must go to a household. यहाँ interest payment गई हैं जिसने capital दिया होगा. This also will go to a household. Then rent गया है. This also might go to a household. Even if the interest goes to a bank will further give it to some household, right? तो अभी ये interest यहाँ से हटा देते हैं. But broadly you will understand that this will in some point this will find its, at some point this interest value at some point will find its way to a household. बैंक के पास जाएगा. बैंक भी एक कंपनी है, एक फर्म है, वो आगे देगी. Now whatever money Reliance receives, let's call that X. Whatever money Reliance receives, उसमें से what has been subtracted? I will subtract corporate tax. I will subtract undistributed profit. Whatever money Reliance receives, it will give to households. Reliance will not give corporate tax. Reliance will not give undistributed profit. It has retained 450 crores in its own account. So whatever money X was received by Reliance, profit नहीं है ये. Don't think this X is 1000 crore. This X is this money. This is X. Out of this X, profit is 1000 crore. But I'm saying Reliance receives X. Reliance, ध्यान से सुनना. Reliance receives X. Out of this X, Reliance distributes wages, interest, rent. Wages, interest, rent distribute करने के बाद Reliance के पास 1000 crore बचे हैं. इसमें से it gives corporate tax and retains 450 crores and gives rest to Ambani ji. So X minus corporate tax minus undistributed profit is what households are getting at this moment. What are we trying to calculate? Money received by households. If government is doing certain transfer payments,
Let's say government is transferring subsidy to household. Is any factor of production exchanged here? No. No factor of production is exchanged here. Government is just transferring this money. Is this money earned by household? No. Households have not earned this money. Is this money received by household? Yes. Households have received this money. So I should add here whatever transfer payments happen. Now, households get money. Households get certain money. Out of the money that households get, they will keep some money in the bank, in savings account. They will get some interest payment. Households must have also taken some loan in the past. किसी ना किसी का कोई ना कोई लोन तो होगा. From that, households also have to pay interest payments back to wherever they have taken loan from. Households also have to pay interest payments back to banks. So in this calculation, I will add one more element, which is net interest payment. Net of those values, उनका net निकाल के what is received, net interest payment to households. This is now x minus corporate tax, x minus undistributed profit, x plus transfer payments, x plus net interest payment to households. This is now the value of money received by households. Now what is x? अब इस पे आते हैं. What is x? X is total income earned by firms. 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 Income earned by firms. Income earned by firms is simply our national income. So this x is national income. This x is total income earned by firm or our national income or NNP at factor cost. This is total income earned by firms. Total income earned by firms. GNP, total income by Indians. Depreciation हटा दी. Total in net national product. उसमें टैक्स और सब्सिडी हटा दिया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज एक्चुअली व्हाट, अगर हमें विजुअलाइज करना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज दिस वैल्यू. जो मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल में हम ये वैल्यू ढूंढ रहे थे, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्यों किया ये समझ आ गया. जीएनपी क्यों किया, क्योंकि नेशनल्स की काउंट करनी थी. जीएनपी से एनएनपी क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हटाना था. सो जीएनपी वाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी वाज एट मार्केट प्राइस. पहले मैंने जीएनपी को बनाया एनएनपी, डेप्रिसिएशन हटा के. अब एनएनपी जब बन गया, मैंने बनाया एनएनपी टू फैक्टर कॉस्ट. ये फैक्टर कॉस्ट बना. नाउ दिस एंटायर मनी, दिस इज नेशनल इनकम, बट दिस नेशनल इनकम इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउसहोल्ड्स. ये पूरा नहीं जाता. इसमें से दो चीजें नहीं जाती. एक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं जाता और एक चीज क्या नहीं जाती हाउसहोल्ड्स में, रिटेन्ड प्रॉफिट. बट वी आर ऑल्सो काउंटिंग, वी आर कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम. इसमें से वो दो चीजें हटाई, बट टू अदर थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग टू हाउसहोल्ड, विच इज ट्रांसफर पेमेंट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स माइनस द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स. तो अब जब मैंने निकाला है, आई हैव नाउ कम टू द फाइनल टर्म विच इज पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस undistributed profit minus corporate tax plus or minus of net interest payment from household. This will depend on what is the sign, and plus transfers. तो अगर मैं ढंग से लिखूं तो पर्सनल इनकम is defined as money
received, not earned, money received by households. This should be equal to national income minus corporate tax minus undistributed profit प्लस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउसहोल्ड. अभी प्लस या माइनस डिपेंड करता है आप फ्रॉम बोलो या टू बोलो. अगर आप नेट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम हाउसहोल्ड्स बोलो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम हाउसहोल्ड्स, तो आप इसको नेगेटिव लिख दो. व्हाट इज नेट इंटरेस्ट पेमेंट आउट ऑफ हाउसहोल्ड्स, या आप बोलो व्हाट इज नेट इंटरेस्ट पेमेंट इनटू हाउसहोल्ड्स. वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वैसे भी मेजर करके ही पता चलेगी. तो आई विल से नेट इंटरेस्ट पेमेंट आउट ऑफ हाउसहोल्ड्स, and last I will write transfers. This is the value of personal income. I know थोड़ी लंबी explanation है, broadly कुछ समझ आया? I have tried to explain as slowly as possible. चलो एक बार दोबारा देखते हैं. We'll come back to this. एक बार दोबारा बताऊंगा मैं. अभी हम पर्सनल इनकम के आगे भी एक कैलकुलेशन है, वो देख लेते हैं. Then we'll come back to this. अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा तो this will become very clear. पर्सनल इनकम इज मनी रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स. पर्सनल इनकम को मैंने कैसे डिफाइन किया? मनी रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. हाउ मच मनी कैन हाउसहोल्ड स्पेंड, डिस्पोजेबल, एट देयर डिस्पोजल टू स्पेंड. दिस इज मनी रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स, पर्सनल इनकम. इसमें से नाउ आई वांट टू कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मेरे हाउस होल्ड में जो पैसा आता है, मेरी मॉम को, मेरे डैड को और मुझे, उसमें से हम कितना स्पेंड कर सकते हैं. व्हाट इज आवर एबिलिटी टू स्पेंड फ्रॉम दैट. तो इसमें से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हमें पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स करना पड़ेगा. जो भी हम पे इनकम टैक्स लगता है वो तो हम स्पेंड नहीं कर सकते. प्लस देयर विल बी सम अदर मिसलेनियस पेमेंट्स, जैसे कि फाइन्स, नॉन टैक्स पेमेंट्स वगैरह. अगर मैं पर्सनल इनकम से ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट कर दूं, नाउ आई कैन से दिस इज द मनी दैट माय हाउसहोल्ड कैन एक्चुअली स्पेंड, नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अब एक काम करते हैं, एक डायग्राम देखते हैं जिससे हमें ये सारा क्लियर हो जाएगा. ये डायग्राम एनसीईआरटी का है. दिस डायग्राम इज डायरेक्टली अ स्क्रीनशॉट ऑफ 12th क्लास एनसीईआरटी. लेट्स सी दिस डायग्राम. दिस डायग्राम शुड मेक इट क्लियर. इसके बाद भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. इसके बाद समझ नहीं आया तो बता देना. देन वील अंडरस्टैंड क्या समझ नहीं आया वो देख लेंगे. ठीक है. सबसे पहले फिगर थी जीडीपी. जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर. ठीक है. इसके बाद एक टर्म थी जीएनपी. जीएनपी क्या थी? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय nationals of a country. Nationals meaning Indians in a given time period, usually a year. जीडीपी और जीएनपी के बीच में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रिलेशन था. अब देखो मैंने क्या बोला, ये पहले ये समझते हैं, ये रिलेशनशिप समझते हैं. आई एम सेइंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पहले फ्रॉम और टू समझते हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. व्हेन आई से देयर इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट इंडिया विल गेट सम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इंडिया को मिलते हैं लेट्स से फैक्टर इनकम, इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड गेट फैक्टर इनकम ऑफ ₹100.
नाउ फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया get some factor income also which is let's say ₹50. अब अगर मुझे जीडीपी में जो वैल्यू ऐड करनी है इसको भूल जाओ, ये कल की रिवीजन है आपकी। अब मैं यहां क्या लिखूं, +50 -50 में क्या लिखूं, ये आपकी कल की रिवीजन पे डिपेंड करता है। दिस आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। व्हाट शुड आई राइट हियर, +50 -50 क्या लिखूं बताओ। मैं लिखूं यहां पर +50 क्यों, क्योंकि इंडियंस ने जीडीपी जीएनपी में क्या फर्क है, बस नेशनल्स और टेरिटरी का फर्क है, बाकी चीजें तो सेम है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वील जस्ट सी इट इन डिटेल। इसी नोट्स में है फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं। देखो देखो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इंडियन आउटपुट फ्रॉम अब्रॉड, इंडियन आउटपुट अब्रॉड माइनस फॉरेनर आउटपुट इन इंडिया। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस, यहां तक तो हमने कल ही पढ़ा था, इंडियन आउटपुट अब्रॉड माइनस फॉरेन आउटपुट इन इंडिया। यहां पर इंडियन आउटपुट अब्रॉड क्या है, इंडियन आउटपुट अब्रॉड क्या है, 100 + 100 - 50। तो यहां पर आना तो +50 ही है, क्योंकि यही फॉर्मूला हमने देखा था। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव सीन यस्टरडे। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इंडियन आउटपुट अब्रॉड माइनस फॉरेन आउटपुट इन इंडिया, राइट। तो लिखना तो यहां +50 ही है, दैट इज द फैक्ट। अब हम समझते हैं इसको बोला कैसे जाएगा। नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ सेइंग दिस थिंग। इसी चीज को बोलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली यहां पर नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है, ₹50 है। इस दिस केस में नेट इनकम है ₹50। नाउ फॉरगेट दिस वैल्यू फॉर 1 सेकेंड, फॉरगेट दिस वैल्यू फॉर 1 सेकेंड। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको भूल जाओ, जो ₹50 है इसको भूल जाओ अभी के लिए। फॉरगेट दिस वैल्यू फॉर 1 सेकेंड। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट वैल्यू निकालने के बाद अब्रॉड से इंडिया जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर देना, है ना। अब एक और केस करते हैं, अभी इसको भूल जाओ, अब इसको चेंज करते हैं, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। लेट्स से दिस फैक्टर इनकम वाज 150। ये जो फॉरेनर्स की है ना, इसको मैंने 150 कर दिया। अब मैं क्या लिखूं, जब मैंने 150 कर दिया, व्हाट शुड आई राइट, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, और सॉरी ये भी उल्टा नहीं करना है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, और आगे क्या लिखना है, अब आप बताना दोबारा, अब यहां पे क्या लिखूं, क्या लिखना था, इंडियन आउटपुट अब्रॉड माइनस फॉरेनर आउटपुट ऑन इंडिया, ये लिखना था ना। अब क्या लिखूं, +50 या -50, अब क्या लिखना है ये बताओ। अब -50 लिखना है, अब -50 लिखना है। अब अगर ये 100, पहले ये 100 और 50 था, अब ये 100 और 150 हो गया। बट इसका मतलब है, इज दिस स्टेटमेंट स्टिल रॉन्ग, अब ये गलत है क्या, ये बता दो, बस मैं समझ आ जाएगा कि नाउ व्हाट इज रिटन इन येलो, इज इट रॉन्ग और राइट। इज दिस रॉन्ग और राइट नाउ,
इट इज नॉट रॉन्ग ना, अभी भी ठीक है ना, स्टिल राइट। इसमें मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इसमें कि जो भी फैक्टर इनकम बाहर से इंडिया आए, जो नेट इनकम बाहर से इंडिया आए उसको ऐड कर देना। जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ये जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया आए उसको ऐड कर देना। नेट इनकम अब्रॉड टू इंडिया कितनी आ रही है, नेट इनकम अब्रॉड टू इंडिया यहां पर -50 आ रही है। नेट इनकम अब्रॉड टू इंडिया -50 आ रही है, समझ आई ये बात। नेट इनकम अब्रॉड टू इंडिया -50 आ रही है। अब्रॉड टू इंडिया 100 रुपीज आर कमिंग, 50 रुपीज आर गोइंग, 150 आर गोइंग अवे। 100 रुपीज आर कमिंग टू इंडिया, 150 आर गोइंग अवे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नाउ -50. So I will just write this formula is still right. You just need to now write plus. Now you will say, अब आप बोलोगे GNP is equal to GDP plus -50, है ना, यही बोलोगे। यहां तक क्लियर? अब क्लियर है? अभी तक क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं, अब मैं एक चीज आपसे लिखूंगा और आपको बताना है वो, अब आपको बताना है GNP इज इक्वल टू GDP प्लस या माइनस, आपने बताना है, प्लस आएगा या माइनस आएगा आपको बताना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा? अरे अब कैसे प्लस आ जाएगा यार, अब ये मत करो यार, अब माइनस आएगा ना, टू बोल दिया ना मैंने, फ्रॉम का टू कर दिया ना, यहां क्या लिखा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जब मैंने इसको टू कर दिया तो साइन चेंज होना चाहिए ना। इतना पढ़ लो यार, सी साइड, मतलब अगर ये गलती हो रही है ना तो सी साइड में एक्चुअली दिक्कत हो सकती है। आई एम नॉट किडिंग, दिस यू नीड टू देन सिट डाउन एंड स्टडी दिस प्रॉपर्ली। नेट वर्ड का मीनिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड, दिस इज जेन्युइनली समथिंग दैट यू शुड नो। अब मैं क्या कह रहा था, एड वॉट एवर नेट वैल्यू कम्स, वॉट एवर नेट वैल्यू कम्स एड, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग वॉट एवर नेट वैल्यू गोज, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ना। मैंने पहले कह रहा था वॉट एवर कम्स एड, वॉट एवर गोज सब्ट्रैक्ट। दो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है यहां पे, सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, है ना। बट मोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया, सो आई विल मूव ऑन। तो अब क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? जीएनपी, जीडीपी, एनएफआईए। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या लिखा है यहां पे, नीचे पढ़ लेते हैं एक बार, आपको दिखेगा तो मैं बता देता हूं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस मच पार्ट ऑफ ग्राफ, दिस मच पार्ट, इज दिस क्लियर? इतना पार्ट ऑफ ग्राफ क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस से नेट बनाना है,
ग्रॉस से अगर नेट बनाना है, नेशनल प्रोडक्ट पे आ गए हम, जीडीपी हमने छोड़ दिया है, अब हम जीएनपी देख रहे हैं। जीएनपी इज ऑफ नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स। अब मुझे ग्रॉस से नेट बनाना है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर यहां पर सिर्फ जीएनपी लिखा है, if this it is only written as GNP, it means GNP at market price. If it is not specified what it is market price. ये बात हमने पढ़ी है अभी। यहां पर सिर्फ GNP लिखा है, it means GNP at market price. This is GNP at market price. ये है GNP at market price. मुझे इसको पहले नेट बनाना है। I have to make this net. To make this net national product at market price, I will have to subtract depreciation. तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? नेक्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी NNP at market price is equal to GNP minus depreciation. ये क्लियर है? थर्ड इक्वेशन हुई, समझ आई? थर्ड इक्वेशन आगे मत देखना अभी, थर्ड इक्वेशन समझ आई? चलो जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, whatever national product is there, all nation, सिर्फ इंडियंस का नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमने कैलकुलेट किया है अभी, है ना? दिस इज इक्वल टू, बिकॉज प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी को ही मैं बोल देता हूं Indians net national income at market price. This same term can be written as this, net national income at market price. यहां तक क्लियर, समझ आया? यस, लिख सकता हूं ना? अरे नो कैसे लिख रहे हो यार इस पे? दिस आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर देन दिस। नाउ नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज दिस एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म्स, एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म्स, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब मैं कहता हूं ये जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम, ये जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस है ना, दिस इज मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स। अब आप बोलोगे फॉरेन फर्म्स में भी तो इंडियंस हैं, इंडियन फर्म्स में भी तो फॉरेनर्स हैं, वो तो हमने हटा दिया ना पहले ही। मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स, यहां तक क्लियर? मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स, यस? ठीक है, चलो। मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट कौन सा प्राइस? एट मार्केट प्राइस। मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट मार्केट प्राइस, ये लिखा है अभी यहां पे। मुझे क्या चाहिए? अभी मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं, ये मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट मार्केट प्राइस। मुझे क्या जानना है? ये जानना है। तो क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट मार्केट प्राइस, मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट मार्केट प्राइस,
इससे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इंपैक्ट अगर मैं हटा दूं तो दिस विल बिकम मनी रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म्स एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने प्रोडक्शन सब्सिडीज भी हटा दी, मैंने प्रोडक्ट सब्सिडीज भी हटा दी, एट फैक्टर कॉस्ट, यस और नो? ये क्लियर? ठीक है जी। अब ये जो मनी रिसीव्ड एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ये जो मनी रिसीव्ड एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, फर्म क्या करती है इस फैक्टर कॉस्ट? ये जो था, मैंने क्या बोला था, मैकडॉनल्ड्स विल डू व्हाट टू दिस? इट विल डिस्ट्रीब्यूट दिस एज वेजेस, एज इनकम, एज प्रॉफिट, एट रेंट, एज रेंट। वेजेस भी इनकम है, इंटरेस्ट भी इनकम है, प्रॉफिट भी इनकम है, रेंट भी इनकम है। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, this has been distributed. WIPR have been distributed. WIPR have been distributed from this point. Money received by Indian firms. Money received by Indian firms at factor cost should ideally be distributed to various Indians as wages, interest, profit and rent. This is WIPR of India, or this is the term that is known as national income. इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। समझ आया? ठीक है। अब अभी के लिए मान लो कि एक ही फर्म है रिलायंस। अभी के लिए मान लो एक ही फर्म है रिलायंस, ठीक है? जैसे रिलायंस बिहेव करेगी वैसे ही सब बिहेव करेंगे। सो अब हम यहां पहुंच गए, वी हैव रीच्ड हियर, वी नो दिस इज मनी रिसीव्ड बाय रिलायंस, दिस इज मनी रिसीव्ड बाय रिलायंस। अभी इंडिया में एक ही फर्म है, उसका नाम रिलायंस है। सारी इंडियन फर्म्स ऐसे ही ऐड करेंगे, हम क्यूमुलेटिवली देख रहे हैं। मान लो एक ही फर्म है जिसका नाम रिलायंस है। नाउ अब रिलायंस के पास ये आ गया, रिलायंस गॉट दिस वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। रिलायंस वेजेस तो दे देगी एज सैलरी टू हाउस होल्ड, रिलायंस इंटरेस्ट भी दे देगी आगे, रिलायंस रेंट भी दे देगी आगे। प्रॉफिट की बात करते हैं, वॉट एवर प्रॉफिट रिलायंस मेक्स, कैन यू डायरेक्टली गिव टू मुकेश अंबानी जी? नहीं, प्रॉफिट पे पहले रिलायंस को टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट पे रिलायंस एक टैक्स देगी कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स देगी। तो मैंने कहा रिलायंस ने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो 1000 करोड़ था, तो 250 करोड़ प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट बच गया? 750 करोड़ बच गया। अब रिलायंस कहता है कि ये जो 750 करोड़ है ना, ये जो 750 करोड़ है, हम रिलायंस के अकाउंट में रखेंगे, कंपनी के अकाउंट में रखेंगे, कंपनी के अकाउंट में रखेंगे 450 करोड़, और अंबानी जी को तो हम सिर्फ 300 करोड़ ही देंगे। हम अपने अकाउंट में रखेंगे, कंपनी के अकाउंट में रखते हैं, अभी अंबानी जी को नहीं देते। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है नेक्स्ट? यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। अंबानी जी इज पार्ट ऑफ हाउस होल्ड ना, घर जाते हैं। मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड इन दिस केस इज हाउ मच? हाउ मच आर हाउस होल्ड रिसीविंग इन दिस केस? WIPR जो था उसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, एक तो ये जो चला गया यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी जो रिलायंस ने रिटेन कर लिया कि हम अपने पास रख रहे हैं, अभी नहीं दे रहे, कभी बाद में देंगे तब बाद में काउंट करेंगे। अभी हमें माइनस करना पड़ेगा एक और चीज, रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट, जो भी ये WPI-PR फिगर थी उसमें से मुझे ये दो माइनस करने पड़ेंगे। यहां पर मैंने 250 माइनस किया फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड 450 फॉर व्हाट रिलायंस रिटेन्ड। ये WIPR फिगर मैंने अभी कैलकुलेट की थी, ये क्या थी? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हुआ? बस इतना क्लियर है। ये पैसा हाउस होल्ड अर्न कर रहे हैं, दिस मनी इज गोइंग टू हाउस होल्ड। यस, ठीक है जी। अब क्या हाउस होल्ड्स को और भी कहीं से पैसा मिलता है? डू हाउस होल्ड गेट मनी फ्रॉम समवेयर एल्स ऑल्सो? गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, एवरीवन विल गेट 2000 रुपीज। जैसे गवर्नमेंट गिव्स टू फार्मर्स 2000 रुपीज इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, टू ऑल फार्मर्स। अब क्या वो इस WIPR में काउंट होगा? यहां पे कोई इनकम हो रही है क्या? हैज फार्मर गिवन एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? नो, government is simply transferring this money, but does households get it? Do households get this money? पहुंचता तो है ना, अर्न नहीं करते, मैंने माना they don't earn it, but we are calculating money received by households, not earned, money received. So money received by household, उसमें ये पैसा तो आएगा ना जो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट देती है। तो प्लस ट्रांसफर्स लिख दो यहां पे। कोई डाउट अभी तक? या ये नहीं पूछता मैं, सॉरी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इट क्लियर? नहीं तो फिर यस नो में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। इज इट क्लियर? अगर आपको समझ नहीं आ रहा ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है, देन यू हैव नॉट रिवाइज्ड यस्टरडेज लेक्चर एंड यू हैव नॉट रेड एनी गवर्नमेंट स्कीम लाइक पीएम किसान। पीएम किसान स्कीम में क्या है? पीएम किसान में आई थिंक इट्स पीएम आशा है किसान, आई थिंक इट्स पीएम किसान ओनली, नाम ब्लैंक कर रहा हूं मैं स्कीम का। गवर्नमेंट कहती है हम हर फार्मर को साल में 6000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे जस्ट बिकॉज दे आर फार्मर्स। वो हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे, बट हम उनको ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं इंडिया के सारे हाउस होल्ड्स को देखना चाह रहा हूं ना, साथ में अंबानी जी भी हैं इसमें, मैं भी हूं, आप भी हो, सारे हाउस होल्ड्स को देखना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट जितनी भी ये ट्रांसफर पेमेंट करेगी, दिस मनी विल बी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स ना। पहुंचेगा तो सही ना ये पैसा हाउस होल्ड्स के पास। दे हैव नॉट अर्नड इट, अर्न नहीं किया उन्होंने। अर्न करा होता अगर उन्होंने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया होता, बट गवर्नमेंट कह रही है हम सारे फार्मर्स को एक गिफ्ट देंगे 6000 रुपए का हर साल। इफ वी गिव अ गिफ्ट टू ऑल फार्मर्स ऑफ 6000 रुपीज, हाउस होल्ड्स विल गेट दिस अमाउंट ना। तो यहां पर प्लस ट्रांसफर्स। अब जो भी पैसा हाउस होल्ड्स के पास आया है अभी तक, जो भी पैसा हाउस होल्ड्स के पास आया है अभी तक, हमने उसको कैसे लिखा है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर। इस टोटल पैसे में से, इस टोटल पैसे में ये हाउस होल्ड्स के पास आया है, वो सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा रखेंगे, कुछ पैसा ये लोग सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे। सारे हाउस होल्ड, ब्रॉडली सोचना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दे विल कीप सम मनी इन सेविंग्स अकाउंट। तो इनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। इन हाउस होल्ड्स ने पहले से कोई लोन ले रखे होंगे, पहले से कोई लोन ले रखे हैं, पहले आया था वो पैसा, उसका इंटरेस्ट इनको पे भी करना पड़ेगा। सारे हाउस होल्ड साथ में सोचना, हम सब साथ में, इनको कोई इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि द मनी एक्चुअली कमिंग टू हाउस होल्ड इज दिस मनी प्लस सेविंग्स इंटरेस्ट माइनस लोन इंटरेस्ट।
ये लिख सकता हूं या फिर इसी को लिख सकता हूं एज नेट इंटरेस्ट पेमेंट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड्स। जो नेट वैल्यू इधर की तरफ आएगी, जो नेट वैल्यू इधर की तरफ आएगी, उसको इस वैल्यू में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। जो नेट वैल्यू इधर की तरफ आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड। ये लिख सकता हूं। चलो यही लिखा है यहां पे, यही लिखा है यहां पे। एग्जैक्टली दिस सेम थिंग इज रिटन हियर। एनएनपी माइनस सीटी माइनस यूपी माइनस एनआईएच, इसको एनआईएच लिख दिया उन्होंने, प्लस ट्रांसफर इज इक्वल टू एनएनपीए फैक्टर कॉस्ट। दिस एग्जैक्ट थिंग इज रिटन हियर। एनएनपी में से ये सब सब्ट्रैक्ट करो, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो पर्सनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे साइन में कंफ्यूज मत होना है। एनएनपी से ये सब्ट्रैक्ट करनी है ब्लू वाली वैल्यू, तो दिस विल बिकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस यूपी माइनस एनआईएच माइनस सीटी प्लस टीआरएच मतलब ट्रांसफर। दिस इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। यही बात यहां लिखी है। पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए हम। अब दिस पीआई, दिस पीआई, दिस, ये जो पीआई है, दिस इज मनी रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। अब इसमें से हाउस होल्ड कितना स्पेंड कर सकते हैं उनकी चॉइस के हिसाब से, वो जहां चाहे वहां करें। उनकी चॉइस कितनी है इसमें से जो आपके हाउस होल्ड में आया। अब पर्सनल एग्जांपल पे आ जाते हैं क्योंकि हाउस होल्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं। जो आपके हाउस होल्ड में आया या जो मेरे हाउस होल्ड में आया, उसमें से हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, हम कहीं भी करें। जो इनकम टैक्स है हमारा, वो तो हम स्पेंड नहीं कर सकते ना, वो तो सरकार को देना पड़ेगा। और जो हमारे सरकार वापस कुछ नॉन टैक्स पेमेंट लेती है, टोल लेती है, फाइन लेती है, वो तो हम अपने हिसाब से स्पेंड नहीं कर सकते ना, वो तो सरकार को देना पड़ेगा। इसको हटा के जो बच जाएगा वो हम खुद स्पेंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहां भी यही बात लिखी है। यहां क्या लिखा है? पीआई, पीआई माइनस दिस ब्लू माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट प्लस नॉन टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये भी हो गया। यस, डन। चलो जी, खत्म, गुड बाय, टाटा, हो गया। Somebody is asking whether I need to memorize this. Now you should not need to memorize. अब आपको ये देख के समझ आ जाना चाहिए। हमने बहुत टाइम लगा दिया इस ग्राफ पे, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। अब मेमोराइज करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, आइडली नहीं पड़नी चाहिए।
बट अगर आप वैसे पूछ रहे हो कि क्या पूछा जाता है पेपर में, तो अगर नहीं पूछा गया होता तो मैं इतना टाइम नहीं लगाता। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इस पे कम से कम 5 क्वेश्चन है इसी ग्राफ पे। एक चीज और पढ़ाऊंगा, फिर ये ग्राफ आपको दिखाऊंगा, आप इसको याद करोगे, याद नहीं करोगे मतलब यू विल अंडरस्टैंड इट, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टॉपिक इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो सिंपल है, डेफिनेशन ही जाननी है हमें। बेसिकली कैपिटल पे क्या, जो पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। Whatever money is spent on capital is investment. आउटपुट हम क्या देख रहे हैं अभी तक, जीडीपी। इंक्रीमेंट +1, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीमेंटल इंक्रीज 1 by 1। ये कहना चाहता है हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट बाय 1 यूनिट। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ जाए। कैपिटल रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज कंट्रीज आउटपुट बाय 1 यूनिट। नाउ लेट्स से कंट्री हैज हाई इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाई मतलब हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 आउटपुट इंक्रीज। बहुत हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़े। तो क्या अच्छी बात है, ये खराब बात है, दिस इज बैड फॉर द इकोनॉमी। इफ कंट्री हैज लो ICOR, दैट मींस लेस इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ जाए। तो क्या ये अच्छी बात है, इन स्मॉल इन्वेस्टमेंट विल बी एबल टू इंक्रीज 1 यूनिट, बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ जीडीपी। एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा नहीं हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट का काम है, इट्स लेजिटिमेटली, चलो कोई नहीं, हम कैपिटल एक्सचेंज रेट में देख लेंगे, कोई बात, विल सी इन एक्सचेंज रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। या कोई नहीं, पढ़ाई देते हैं, सॉरी, आई जस्ट टीच ओनली। ठीक है, नाउ हाउ इज जीडीपी रिपोर्टेड, हाउ इज जीडीपी रिपोर्टेड? I report GDP as India's GDP is $3.5 trillion. मैंने इंडिया की जीडीपी रिपोर्ट की $3.5 ट्रिलियन। मैंने क्या किया, मैंने जीडीपी को पहले रुपीज में कैलकुलेट किया, फिर मैंने इन रुपीज से सीधा इसको कन्वर्ट किया डॉलर्स में, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया। कन्वर्ट कैसे किया डॉलर में, $1 इक्वल टू 86 रुपीज, ऐसे कन्वर्ट किया और यहां पे लिख दिया। मैंने रुपीज में कैलकुलेट की, 86 से डिवाइड करी और यहां पर लिख दिया, डॉलर में आ गया, है ना। ये है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। जो मार्केट में एक्सचेंज रेट है, जो मार्केट में एक्सचेंज रेट है, मैंने उसके बेसिस पे एक्सचेंज करके यहां पे लिखा है $3.5 ट्रिलियन। दूसरा तरीका क्या है, मैं देखता हूं, मैंने एक बास्केट कंस्ट्रक्ट करी, आई कंस्ट्रक्टेड अ बास्केट, इसमें देयर वर लेट्स से लॉट ऑफ गुड्स, कुछ फूड के गुड्स, कुछ सर्विसेज। आई पुट अ बास्केट, नॉट ऑब्वियसली नॉट फिजिकल बास्केट, हाइपोथेटिकल बास्केट, जिसमें कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज, बहुत सारी चीजें थी। In this basket, I put a lot of things that represented a lot of activity in the economy. मैंने देखा ऐसी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में भी मिलती है, ऐसी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में भी मिलती है। जैसे यहां पर आई हैव पुट मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, आई हैव पुट 1 चेयर, 1 पेन, डॉक्टर्स फीस, ऐसे करके मैंने वैल्यू देखी, बहुत सारी चीजें लगाई। बास्केट कैसे कंस्ट्रक्ट की वो बाद में देखेंगे, बट बास्केट कंस्ट्रक्ट की, और मैंने इस बास्केट का देखा कि this is this basket, it has many goods, it has many services, and I calculated some value of this basket. वैल्यू कैसे कैलकुलेट की कि इंडिया में if I buy this basket, इंडिया में if I want to buy this entire basket that has a lot of goods and services, this will cost me rupees 2100 in India, 2100 in India.
Same basket if I want to buy in US. Same basket, डॉक्टर फीस, मैकडोनल्ड्स, रेंट का थोड़ा सा क्या हिसाब किताब है, सब कुछ मैंने डाल के, नाउ सेम बास्केट आई वांट टू बाय इन यूएसए. इफ आई वांट टू बाय इन यूएसए द कॉस्ट कम्स आउट टू बी $100. अब यहां पर क्या एक्सचेंज रेट दिख रहा है? यहां पर एक्सचेंज रेट दिख रहा है दैट यार $1 या whatever 2100 rupees can buy, whatever 2100 rupees can buy, $100 can buy. The purchasing power of 2100 rupees is the same as purchasing power of $100. जो 2100 रुपए में मिलता है इंडिया में, वो यूएस में $100 में मिलता है. Purchasing power of 2100 rupees is same as $100. So purchasing power of 21 rupees is same as $1 on the basis of purchasing power parity. Parity मतलब इक्वालिटी, इक्वल परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर इक्वलाइज करके 21, ये बास्केट इंडिया में 2100 की, ये बास्केट यूएस में $100 की. परचेजिंग पावर ऑफ $100 सेम एज 2100. आफ्टर इक्वलाइजिंग परचेजिंग पावर आई कैन से दैट whatever 21 rupees can buy, that $1 can buy. ये एक्सचेंज रेट नहीं है. एक्सचेंज रेट वही रहेगा, $1 equal to 86. This is not exchange rate. This is PPP rate. What you can buy for $1, you can buy for 21 rupees. Now when I know this figure, now I calculate India's GDP. I calculate India's GDP in rupees. I divide now by 21 and call it PPP GDP. PPP GDP. Purchasing Power Parity GDP. As per PPP GDP, अगर मैं PPP नंबर से काउंट करूं, China's GDP is bigger than USA. India is third largest GDP in the world. अगर मैं इस तरीके से काउंट करूं तो, if I count on market exchange rate, USA's GDP is biggest. एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको. आपने बहुत बार ये सुना होगा, मेरे दोस्त का यूएस में ना 1 करोड़ का पैकेज है, और आपको लगता होगा ये तो अमेजिंग, 1 CR, राइट? या लेट्स से somebody says my friend in USA earns $100,000. This is $1 lakh. आप मल्टीप्लाई करते हो 86 से, आप सोचते हो 80 लाख रुपीज इनकम, ह्यूज इनकम दिस पर्सन हैज. बट ये तो एक्सचेंज रेट है ना, ऐसे नहीं मेजर करते. Whatever they earn, from that they will purchase something. कुछ परचेज ही करेंगे ना. एक्सचेंज रेट इन डॉलर्स को आपने रुपीज बनाना है तो इतने रुपीज मिल जाएंगे. वो एक एक्सचेंज रेट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसको भी साइड कर दो. अभी देखते हैं, अगर आप यूएस में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो तो डॉलर ही खर्च करोगे. यूएस में जो चीज आप $1 लाख की खरीद सकते हो, इंडिया में वो चीज आप 21 लाख रुपीज की खरीद सकते हो. तो ये है ये पैकेज एक्चुअली. दिस इज दिस पैकेज. इट इज नॉट 80 लाख, इट इज नॉट 1 करोड़ पैकेज. ठीक है. आई एम शॉक्ड व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर हेडलाइंस लाइक दिस, $150,000 a year, 1 crore package to IITian. This is that package in their parlance. अब आप ये बोलो कि वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है एक्सेट्रा, दैट इज योर सब्जेक्टिव आर्गुमेंट. बट एक्चुअली दिस इज द परचेजिंग पावर पैरिटी. ये कॉन्सेप्ट समझ आया? थोड़ा अच्छा लगा होगा खुद के बारे में, आई एम श्योर, ये सुनने के बाद. चलो, अब आपके पास 3 मिनट है इसको दोबारा देखने के लिए. जूम करके छोड़ देता हूं. इसको दोबारा देखने के लिए आपके पास केवल 3 मिनट का समय है. आफ्टर दीज 3 minutes we'll be solving questions. You can look at it again. Ideally you should try and draw it by yourself.
लेट्स गो। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, गलतियां मत करना प्लीज। You have 1 minute. चलो वेरी गुड। गुड। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5।
Question 6. Question 7. Question 8. Question 9. Question 10.
Question 11. Twelve. Thirteen. 'Last'. 14. चलिए लेट्स डिस्कस. पहले आप स्कोर कैलकुलेट कर लो जल्दी से. These are the answers. You can calculate your scores. Twelve, 13, 11.
15 आउट ऑफ 17 कैसे स्कोर आ रहा है 14 क्वेश्चन में? 14 आउट ऑफ 14 गुड, 12, 13, 9, ठीक है। चलो देखते हैं हम, लेट्स सी। Which of the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? Recession meaning fall in aggregate demand. Aggregate demand क्या होता है? CIG x - m. हमें ऐसा कुछ करना है जिससे ये कंपोनेंट्स बढ़ जाएं. Cut in tax rates, okay, accompanied by increase in interest rate. Increase in interest rate will make consumption fall, so this cannot be the right answer. Increase in tax rate. Increase in tax rate will also make consumption fall, so this is also not the right answer. Now there are two. Increase in expenditure on public project. This will increase the component of G. Reduction of expenditure on public projects. This will reduce G. हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है. So the ideal answer in this case will be increase in expenditure on public projects so that G will increase and aggregate demand in the economy will be stimulated. Answer is B. Next. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increase. अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है. दिस इज नॉट लीडिंग टू डेवलपमेंट. आंसर इज सी. डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, capital formation may not result in significant increase in output if there is high capital output ratio. High capital output ratio. Even though there is capital formation, but capital formation high होने के बाद भी there is no economic growth because capital to output ratio is high. Lot of capital is required to increase the output. Therefore, despite high savings economy, high saving economy से there is a link to investment, still there will be not rise because capital output ratio is high. Fourth, national income of a country in a given period is equal to the. Now this question is a bit confusing. तो पहले इसके आंसर्स देखते हैं. Sum of total consumption and investment expenditure. This is wrong. Sum of personal income of all individuals. This is obviously wrong. Now, national income of a country for a given period. दो ऑप्शन बचे. Total value of goods and services produced by the nationals. Money value of final goods and services produced. Now, obviously it's confusing. But if I have to calculate national income, I will always look at final goods and services. And I am calculating the money value. So D is the more appropriate answer. D is the more appropriate answer in this case. You can get confused by the first one, but look at both options and think which is more appropriate. Right? Now, economic growth in country X will necessarily have to occur if there is capital formation. If there is capital formation, that means investment is on the rise. It will lead to economic growth because aggregate demand will increase as it has four components CIG x minus m. Now, which of the following is are correct? अब इस क्वेश्चन में अगर आपकी गलती हुई है, if you have gotten this question wrong, it's okay, because ये आपको तभी समझ आएगा जब हम इन्फ्लेशन पढ़ लें. पर फिर भी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर real GDP of the economy but not inflation rate. This is wrong. Obviously it can be used to measure inflation. तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है. फर्स्ट देखते हैं. GDP deflator captures the average price of unchanging basket of commodities. ये unchanging basket of commodities, unchanging basket, ये कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं? ये कंस्ट्रक्ट करते हैं CPI WPI में. Unchanging basket of commodities CPI WPI में कंस्ट्रक्ट करते हैं. GDP deflator will capture all commodities. बास्केट कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही है यहां पे. All commodities, पूरी GDP का कैप्चर करता है. So first statement is also wrong. Answer here is D. Now next, level of per capita GDP depends on which of the following?
number of people in the working age, how many people are there in working age, how many of these people in working age are actually working, and how many people in this working age are working at what efficiency. ये क्वेश्चन एक्चुअली यहां से है. क्यों है ये क्वेश्चन यहां से? वी नीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने ज्यादा लोग वर्किंग एज में होंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं. जितने ज्यादा वर्कर पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं. जितनी ज्यादा एफिशिएंसी है, वर्कर प्रोडक्टिविटी है, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी है. एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी determines the level of GDP. You increase employment and you increase efficiency, you will reach closer to potential GDP. So answer here is D, all three. Now, which of the following is not correct? Which of the following is not correct? Not correct. Read the third statement. Nominal GDP is calculated by valuing outputs of different year at constant prices. No, at current prices. Answer is C. Situation where equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP. Equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP. Remember this graph? This is long run aggregate supply. This is short run aggregate supply. This is aggregate demand. There was a gap here. What was this gap known as? Known as recessionary gap. Answer is A. इस पे एक और क्वेश्चन भी है नीचे. 10. Which of these following includes or equals to personal disposable income? Personal disposable income is equal to personal income minus tax payment minus non-tax payment. Tax payment will be direct taxes paid by households and miscellaneous fees, fines, etc. will be non-tax payment. Answer is A. Value of final goods and services produced by normal residents of a country and their property, whether operating in the domestic territory of country or outside in 1 year, is termed as final value of all goods and services produced by normal residents of a country and their property, whether operating within the domestic territory or outside, is termed as GNP, which is the same as GNI. Answer is A, 11A. National product at factor cost is equal to factor cost to market price. I have to add tax, I have to subtract subsidies. So market price minus tax plus subsidies is equal to factor cost. Arrow उल्टा कर देते हैं. This is given in option B. In national income accounts, personal income is defined as. ये तो हमने पढ़ा ही है. This I am not explaining. I have already explained in a lot of detail. Answer is A. Direct from that chart. Now, amount by which level of real GDP exceeds the full employment level. Real GDP exceeds the full employment level. This is real GDP, this is full employment. Full employment पे हमारा बनता है long run aggregate supply. Here real GDP is exceeding the full employment, known as inflationary gap. Answer will be B. Clear? Done? चलो चलिए
थैंक यू. प्लीज रिवाइज बिफोर यू गो टू स्लीप. प्लीज रिवाइज बिफोर यू गो टू स्लीप. कल मिलते हैं. कल अनएम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करेंगे. सी यू. हैव अ गुड इवनिंग.